So while preparation, have you ever thought the questions of XAT are very difficult? Or have you ever came across any question and you think, Arey, it is very time taking? So if so you are at a right platform. So herein we will be taking XAT papers. So today I'll be starting off with XAT 2024 first of all. So before that, I Kumar from TeamWire welcome you all. So let's take this paper. Okay, we'll be solving each and every question. I'll be taking QA and DI of this XAT 2024 paper. Okay. So each question I'll be solving it, but I think it's a revision of yours. So as it's a revision video, okay, you might have completed your assignments. You must have done with all types of questions that are needed. So it's a revision class. So please make sure that before I solve any question, you are also taking part in it. Your participation or your initiation is very important. All right. So let's begin with this. So we have the first question. Okay, so first question, if you'll see, it is full of data. Okay, this much lengthy question. So what should we do? We should read the question very carefully. Okay, if you understand the question, half of the question is done. So it's very important for us to understand the question very well. And if the question is full of so many data, so obviously we have to read it completely and thoroughly. So in a small college, students are allowed to take only one specialization. Traditionally, only two specializations are offered. First one is science and other one is arts. So there in a college, there are only two specializations. Either you can be a student of science or you can be a student of art. Students enrolled to specialize in science must take physics and mathematics subjects. So I'm simply writing it. If you are taking your subject as science, okay, suppose you are taken your subject as science, so you must be opting for two papers, which is physics and maths. While students enrolled to specialize in arts, but if your paper is arts, if you're going for arts, you must take economics and political science. Okay, so a person must take economics and political science. So we can say it's political science. Next, students enrolled in science are not allowed to take either economics or political science, while students enrolled in arts are not allowed to take either physics or mathematics. It's very clear that if a student is of science, okay, if he has opted for science, he can't go for an economics paper or a polity paper. Similarly, if you have taken arts, so you can go for economics and polity. You can't take physics and mathematics, right? Recently, the college has started a third specialization called the Math Eco. Okay, so a third specialization has been started and it is called as Maths Eco. That requires students to take economics and mathematics. And in this, if you're going for this, okay, so you'll be allowed to take mathematics and economics. Okay. However, math and eco students or math eco students would not be allowed to take either physics or political science. Same condition, ठीक है, वो लोग physical और political science नहीं ले सकते. When the college opens this new specialization for enrollment, it allows students originally enrolled for science or arts to switch to math eco. From among the students originally enrolled in arts, 20 students switch to math eco. So इसमें जितने भी total students है, let the total student be A itself. So out of this, 20 students have switched to math eco. So the students left will be what? It will be A minus 20. अगर आर्ट्स में पहले A students थे, ठीक है, if 20 students of it are switching, so the number of students left will be what? It will be A minus 20, right? Next, this makes the number of science students twice the number of art students. So let from an equation. So as per the statement, it's saying that whatever is the number of science students, so let the number of students is S. So this makes the number of science students. So the number of science students will be twice the number of art students. So how many students of arts now we have? Initially we had A students, but 20 have opted out. So we'll be having A minus 20. So the number of science students will be what? It will be A minus 20. Okay. So it will be twice of A minus 20 as per the given information. Okay. Next, after this, from among the students who originally enrolled in science, 45 students switch to math eco. ठीक है, इनिशियली सपोज अगर साइंस में S स्टूडेंट्स थे, नाउ 45 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड आउट एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर मैथ इको. ठीक है,
So this makes the number of art students twice the number of science students. Now how much will be the number of art students? It will be a minus 20. So this a minus 20 or the number of art student will be twice the number of so twice the number of students that are left. So twice kitna hoga? It will be 2 times of s minus 45. In total, how many students from among those originally enrolled in science or arts are taking economics students? तो हमें करना क्या है? सिंपली हमें करना क्या है? वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन आर्ट्स? बिकॉज जिन्होंने आर्ट्स लिया है डेफिनेटली दे माइट हैव टेकन इकोनॉमिक्स. दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन आर्ट्स, उनके पेपर में इकोनॉमिक्स है ही. सो सिंपली वी हैव टू काउंट द वैल्यू ऑफ ए एंड विल बी एडिंग टू दिस वी हैव टू ऐड 45. व्हाई? बिकॉज जो स्टूडेंट साइंस से निकलकर मैथ इको में जा रहे हैं, so they will be obviously taking economics. So the total number of students who are opting for economics will be what? First of all, the students who are in this category A. So we have to get the value of A, and in this we have just need to add 45. So और मुझे कुछ निकालना नहीं है. So what I need to get the value of A. So let's eliminate the value of S. So S is what? S is 2 times of A minus 20. Let's place it here. So when you will place it here, so we'll have A minus 20 is equals to 2 times of S will be what? It will be 2. So it will be 2A minus 40, right? 2A minus 40 minus 45. ठीक है, आप simply replace the value of S. So ये क्या होगा? 2A minus 40 minus 45. So it will be minus 95. So it will become A minus 20 equals to 4A and minus 95. So minus 95 को अगर आप 2 times करोगे, so it will be what? It will be minus 190. Let's move this to that side. So ये क्या हो जाएगा? ठीक है, so 4A it will be 3A, and from this 3A 40 and 45 is 85. Oh sorry, it will be 85. Sorry. So if this is 85, it will be 170, right? So it will be 170. Okay, so if I'll switch, so ये हो जाएगा 3A is equals to 150. So the value of A will be what? Or the students who have opted for arts. अब जिन्होंने आर्ट्स के लिए इनिशियली ऑप्ट किया था, डेफिनेटली दे माइट बी हैविंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इनके पास है. ये 50 स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी है. एंड हाउ मेनी न्यू पीपल विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स? वही न्यू पीपल, दोज हु आर ऑप्टिंग आउट ऑफ साइंस. इनके पास ही इकोनॉमिक्स नहीं था. अगर ये अभी मैथ इको में आ रहे हैं, सो दे विल बी ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स. तो 50 ये हो गए और 40 हो गए ये साइंस वाले. ठीक है, जो साइंस को ऑप्ट आउट कर रहे हैं एंड दे आर ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स, मैथ इकोनॉमिक्स. So 50 plus 45. So total 95 students are there who are opting for economics overall. Okay, so the question was very lengthy, but answer was not difficult at all. Alright, so this was question number 1 for you. Next we have is question number 2. Finally a shorter question, right? As compared to the first one, चलो एक छोटा क्वेश्चन तो देखने को मिला. छोटा क्वेश्चन देखकर ही ना मेरी तो आंखें चमक जाती है. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कम टाइम लगेगा. In a school, the number of students in each class from class 1 to 10 in that order are in arithmetic progression. ठीक है, so class 1 से लेकर class 10 में जितने भी बच्चे हैं, they are in arithmetic progression. So I can say that कि अगर class 1 में suppose if there are A students, class 2 there will be A plus D students. ठीक है, why? Because this is in AP. In class 3 will be having A plus 2D students. Similarly, अगर मैंने पूछा what will be the number of students in class 10th, so it will be A plus 90. Clearly it is saying that कि the number of students, ठीक है, they are forming an arithmetic progression. So this is A plus D, A plus 2D. Okay, the total number of students from class 1 to 5. तो अगर आप class 1 to 5 में देखोगे तो class 1 to 5 में कितने students हैं? So simply we have to add A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus A plus 4D. या आप चाहो तो summation of an AP का भी formula use कर सकते हो, but it will be better directly आप add करो. So what we have to do from 1 to 5. So 1 to 5 will be A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus A plus 4D. So A कितनी बार हो रहा है, add हो रहा है? So A is adding 5 times. और D कितनी times add हो रहा है? D plus 2D plus 3D plus 4D. यानी total अगर आप add करोगे it will be 10 times of D. So total number of students from class 1 to 5 is what? It is 5A plus 10D. So the total number of students from class 1 to 5 is twice. So this value is twice of what? Twice of the total number of students from class 6 to 10.
तो क्लास 6 से 10 के बीच में कितने बच्चे होने वाले? इन क्लास 6 आई हैव a प्लस 5d, 7 में होगा a प्लस 6d, 8 में होगा a प्लस 7d, अप टू a प्लस 9d. तो अगेन ऐड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई हैव 5 a's, तो 5a तो मैंने लिख दिया. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड 6d, 7d, 8d, 9d. ठीक है, और सॉरी 5d भी ऐड होगा ना, क्लास कौन से यहां से ऐड करना है, फ्रॉम क्लास 6. सो 5d प्लस 6d प्लस 7d प्लस 8d प्लस 9d. सो 5 से लेकर 9 तक ऐड कर लो, तो 5 से लेकर 9 ऐड करोगे तो इट विल बी 35d. So this is the equation that we are getting. Okay, so if I'll solve it, so we'll have 5a plus 10d as 10a plus 75d, or we can say that 5a is equals to minus, oh sorry, it will be 70, it will be minus 60d. So the value of a is what? A is minus of 12d. So this is the relation that we are getting. So a is what? A is minus of 12d. Now we have one more data. It says that if the total number of students from class 1 to class 4 is 462. ठीक है, 1 से लेकर 4 तक में कितने स्टूडेंट्स हैं? We have 462. तो अगर 462 स्टूडेंट्स हैं, so again from 1 to 4, so it will be what? Total number of students will be from 1 to 4, 4a plus d, 2d and 3d, यानी 6d ऐड कर दो. This is the total number of students from class 1 to 4. As per question, this value is 462. If I'll replace a with minus 12d, ठीक है, अगर मान लो a को minus 12d से replace कर दोगे, so what will be having? So minus 12 into 4, it will be minus 48d plus 6d is equals to 462. So we are having minus of 42d as 462, or we can say that the value of d is what? It is minus of 11, right? So now we have the value of d and we can also get the value of a. तो हमें क्या चाहिए? How many students are there in class 6? So in class 6, how many students will be there? It will be a plus 5d, sixth term of an AP. What will be the value of a? Minus 12 into minus 11. The value of d is minus 11. Okay, so what is the value of a? It will be plus 132. 12 into 11, ठीक है, 132. So it will be 132 plus 5 times of minus 11. So 132 में से 55 यानी 77 वाला आंसर टाइप होना चाहिए, यानी 7 वाला आंसर टाइप होना चाहिए. So correct answer to question number 2 is what? It is 77. ठीक है, a very doable question. अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो पहला ही क्वेश्चन था. पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ा था बट सॉल्यूशन वाज लेस कैलकुलेशन था वहां पर. Here we have good amount of calculation. Question number 3 from the chapters of TSD. Now TSD plays a very important role. ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है इस बार मोदी जी के पार 400 के 400 वोट भी मिल जाए, 400 पार भी हो जाए, बट स्टिल अ क्वेश्चन फ्रॉम TSD चैप्टर विल स्टिल बी देयर. A flight traveling to a destination 11,200 kilometers away was supposed to take off at 6:30 a.m. ठीक है, so early morning 6:30 a.m. the flight was supposed to take off. Due to bad weather, the departure of the flight got delayed by 3 hours. ठीक है, so actual scheduled time was 6:30, but because of bad weather, it is now rescheduled at 9:30 a.m. ठीक है, ठीक है, so it is rescheduled at 9:30 a.m. I'm writing it here. The pilot increased the average speed of the airplane by 100 km per hour from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour. ठीक है, तो अब इसने क्या किया? The pilot has increased the speed. So अब ये जो overall delay है, it is getting reduced by 1 hour. So earlier it was about to get reduced by 3 hours. लेकिन when the pilot has increased the speed of 100 kilometers, ठीक है, when the speed has been increased by 100 kilometers, now the time taken by total journey is getting reduced by 2 hours. जितना भी टाइम पहले लग रहा था ना, now there will be it is taking less than 2 hours. And why it is taking less 2 hours? Because of the increment in the speed. So had the pilot increased the average speed by 350 kilometers per hour from the initially planned average speed, when would have the flight reached its destination? All right, very good. So see, so first of all, let us take that the original speed of the flight is s. So if original speed is s, the time taken would have been what?
it would have been 11,200 upon s. ठीक है, इनिशियली इतना टाइम लगता, बट नाउ द फ्लाइट स्पीड इज गेटिंग इंक्रीज बाय 100. तो जब आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया, so the new time taken will be what? It will be s plus 100. And as per the question, the difference of the time taken is what? It is 2 hours. ठीक है, ध्यान से देखो, the difference of the time taken is 2 hours. देखो, the flight got delayed by 3 hours. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना डिले हो रहा है फ्लाइट? 1 hour. यानी 3 घंटे का पहले लॉस होना चाहिए था, लेकिन अभी लॉस हो रहा है सिर्फ 1 घंटे का. ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ ओनली 1 hour. इट मींस दैट 2 hours का जो टाइम पीरियड है दैट हैज बीन कंपेंसेटेड. And how it has been compensated? By increasing the speed by 100 kilometers. So this is the relation we'll be having. So let's solve it. So if you take 11200 common, ठीक है, और 2 से divide कर लोगे, so it will be 5600, right? So 5600 I am taking common, so it will be s plus 100 minus s upon s into s plus 100. And the value of it is equals to 1. 1 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये 2 से सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है, सो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली व्हाट विल बी हैविंग 5600 इज इक्वल्स टू s into s plus 100. नाउ इफ यू आर गुड विथ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इफ यू आर गुड एट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो आप ये s की वैल्यू डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो. एंड इफ यू आर नॉट, सो फॉर्म दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ s. लेकिन अगर आप देखो 5600, सो 5600 कैसे आता है? Sorry, and there will be 100 also, right? यहाँ पर 100 भी है ना, ये वाला 100, so it will be into 100. So it will be 560000. So now we have this quadratic equation. So you can form a quadratic equation and solve it. You will be getting the value of s. But if you'll observe it very closely, so what I need 56,000. और यहां पर क्या है? s इंटू एस प्लस 100 है. तो अगर मान लो मैंने s की वैल्यू 700 रखी सपोज, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 800. सो इज माई इक्वेशन गेटिंग सेटिस्फाइड? 8 into 7 is 56 and I'll have 4 zeros. So obviously the equation is getting satisfied. It means that the value of s is what? It is 700. अगर आपको ये नहीं दिखता, form the quadratic equation and get the value of it. ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा है, it's a matter of concern. ठीक है, we need to practice to such an extent कि हमें ये चीज दिखने लगे एग्जाम में भी. So we can say that the speed of the flight is what, or the normal speed of the flight is what? It is 700 km per hour. Okay, next. Next it says that had the pilot increased the average speed by 350 km per hour from the initial planned average speed, when would have the flight reached its destination? तो अर्लियर देखो स्पीड वॉज 700 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब अगर 350 पर किलोमीटर आवर से आप इंप्रूव कर दोगे, सो नाउ योर स्पीड, न्यू स्पीड विल बी व्हाट? न्यू स्पीड विल बी 700 प्लस 350. अगेन वी हैव टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस दैट वी हैव टू ट्रैवल इज, और द कवर इज, इट्स 11,200. सो टाइम विल बी व्हाट? इट विल बी 11200 अपॉन 1050. 00 will be cancelled, right? 5 के टेबल में दिस विल बी 2 times, दिस विल बी 1 times. ये 5 टेबल में ये 5 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, ये 5 times में, सॉरी 2 times में, 5 के टेबल में, सॉरी, ठीक है. सो दिस विल बी 2 times, राइट? 12 फिर से 2 times एंड इट विल बी 4. फिर से ये 21 से डिवाइड हो रहा है क्या? 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 times में, ठीक है, 7 3s and 2. सो फाइनली टाइम क्या आ रहा है? इट इज 32/3 hours. यानी नॉर्मली और नियरली वी कैन से इट इज 11 hours. ओके, नियरली इट इज 11 hours. तो देख लो आपको 11 hours कहां पर मिला, बट स्लाइटली लेसर देन 11 hours ऑल्सो. ठीक है, वी हैव टू कीप इन माइंड कि स्लाइटली लेसर देन 11 hours है. सो इफ योर फ्लाइट इज स्टार्टिंग एट 6:30 AM, oh sorry, it is starting at 9:30 AM. Actual time of departure is 9:30 AM, right? So if the departure time is 9:30 AM, ठीक है, from 9:30 AM to 11 hours, अगर 9:30 से 9:30 अगर 12 hours लेते तो it would have been 9:30. Subtract 1 hour, so it is 8:30. But your actual time will be lesser than that. 8:30 से छोटा वाला ऑप्शन. So 8:30 से छोटा ऑप्शन कौन है? It's 8:10. ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर. बट इफ आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑप्शंस, व्हाई शुडंट आई बी यूजिंग इट?
ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने, जहां तक हो सके वहां सॉल्व करो, ठीक है, जहां से आंसर दिखना लगे। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गॉज द ऑप्शंस आल्सो। अगर आंसर सामने दिख रहा है सो आई कुड सेव माई टाइम। अगर आप देखो आप चाहो तो इसको आराम से ये भी कर सकते हो, इट विल बी 10 आवर्स एंड 2/3, सो इट विल बी 40 मिनट्स, 10 आवर्स 40 मिनट्स होंगे, ठीक है। इफ यू आर गुड इन दैट ऑल्सो आप वो भी करके देख सकते हो, बट फॉर मी अप्रोक्सीमेशन इज अ बेटर वे इफ ऑप्शंस आर गिवन, एंड आई वांट कि आप भी यही करो, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो। और ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं हो पाएगा, ठीक है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is from the chapters of logarithm. Again, a very important chapter, ठीक है, for CAT perspective also and for XAT perspective also. And the best part I consider about log is ना, मैं जब भी log पढ़ाता हूँ, I say it is a very good chapter to be very sure of. There are very limited concepts. अगर आपने एक बार वो concepts कर लिया ना, definitely you will be solving the question. Trust me. ठीक है, अगर आपने अच्छे से concept किया और नहीं हो रहा है फिर बताना, बोला कि सर ये तो एकदम नया ही क्वेश्चन आ गया, ऐसा होगा ही नहीं। लॉग के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इट इज क्लियरली दिस इज लाइक दिस, ओके, ये ऐसा दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है। सो लॉग x minus 2 base is 5, okay, is equals to 2 times of log 2x minus 4 and the base is 25. So where x is a real number, for many different for how many different values of x does this equation hold? ठीक है, कितने वैल्यूज ऑफ x के लिए ये इक्वेशन होल्ड होता है, और हाउ मेनी डिफरेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वी कैन हैव। सो फर्स्ट थिंग ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है, जो भी आपका नंबर होता है, जैसे इफ सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस log of a with base b, so both my base and number should be greater than 0. At the same time the value of b couldn't be 1, ठीक है, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इट कैन बी लेस देन 1, जैसे 0.25 हो सकता है। Any positive number we can take for b, ठीक है, but it can't be exactly 1. So if I'll see by this condition, so इन दोनों को साथ में देखो, दोनों x minus 2 ही है, right? So it means that x minus 2 should be greater than 0, or we can say that x should be greater than 2, ठीक है। आपका x का चाहे जो भी वैल्यू आए, first of all it has to meet a condition, and the condition is x has to be greater than 2. Let's try to simplify it further. तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। So this 25 can be written as, so this is 2 into log of 2x minus 4, and 25 can be written as 5 to the power of 2. Now whatever is the power of base, ठीक है, बेस का जो भी पावर है ना वो क्या होता है, सामने आ जाता है, and it will get divided. So ये जो 2 का 5 की पावर 2 है, this 2 will come in front and it will get divided. So finally 2 और 2 cancel हो जाएगा, so we'll have like this. So this is a log function with base 5, this is a log function with base 5. It means that both the numbers should be same. So x minus 2 should be equals to 2x minus 4. Further अगर आप इसको solve करोगे, you'll get x is equals to 2. So can I say that the answer is what? How many different values of x we are getting? I'm getting one value of x. But is it satisfying the bare minimum condition? The bare minimum condition was the value of x can be anything, but it should be greater than 2. Is x equals to 2 greater than 2? No. So the correct answer to the question is what? It's option A. एग्जामिनर को क्या करना चाहिए था ना, इसे ऑप्शन 1 में रखना चाहिए था और इसे 0 रखना चाहिए था। बच्चे तुरंत देखेंगे ओके 1, ओके आई वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 2, यानी वो आंसर है। एग्जामिनर लगता है बहुत सीधा साधा था, मेरा जैसा एग्जामिनर रहता तो जरूर ये ऑप्शन में डालता। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज ₹10,000 per day प्लस एडिशनल ₹5,000 per show। यानी what is the cost? So minimum cost of 10,000, ठीक है, that we have to bear whether the shows are getting continued or not, ठीक है, and plus 5,000 per show. So suppose if there are x shows, the total number of charge will be what? 10,000 plus 5,000 into x, where x is what? X is the number of shows that is being continued, ठीक है, x क्या है, जितने number of shows चल रहे हैं। The theater has 200 seats. A new movie released on Friday, ठीक है, ये बात नहीं भी बताते तो हमें पता है, a new movie is released on Friday. So there were 3 shows where the tickets price was ₹250 each for the first 2 shows
एंड ₹200 फॉर द लेट नाइट शोज। तो बेसिकली यहाँ पर 3 शोज है, ठीक है, शो 1, शो 2 एंड शो 3। प्राइसेस आर, it's 250 per chair, 250 per ticket, and it is 200 rupees per ticket. For all the shows together, the total occupancy was 80%. अब यहां पर क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, so we'll assume that 80% of people have been watching movie in this, 80% of people are watching movie in this show, and 80% of people are watching movie in this show. But actually question ऐसा नहीं है. Question has said that for all movies together or for all the shows together, the total occupancy is 80%. ठीक है, सेपरेटली किसी का भी 80% नहीं दिया, ओवरऑल जो टर्नआउट है दैट इज 80%. सो व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल? तो इमेजिन अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, सो इन विच सिनेरियो आई विल बी गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा ना जब जो मेरा कॉस्टलियर सीट्स है वो ज्यादा बिके. इफ यू वांट टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब पॉसिबल है? जो मेरा कॉस्टलियर सीट जो है उसकी सेल ज्यादा हो. यानी आई वांट दैट इफ आई हैव टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो ये हाउसफुल होना चाहिए, ये हाउसफुल होना चाहिए, और फिर ये चले जितना होगा उतना होगा. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होने चाहिए? 200 200 200 600 टोटल सीट्स हैं, बिकॉज देयर आर 3 शोज. तो अगर 3 शोज हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी 600. 600 का 80%, सो वी कैन से दैट द टोटल अटेंडेंस शुड बी 480. ये 480 कैसे आया, समझ में आया क्या? 480 कहां से आ रहा है? देखो, we want that कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट? सो इफ वी वांट टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट, टोटल स्ट्रेंथ पहले कितना देखो, 200 200 एंड 200, सो टोटल स्ट्रेंथ इज 600. एंड क्वेश्चंस क्लियरली सेड दैट द टोटल ऑक्यूपेंसी इज 80%. सो 80% ऑफ द टोटल ऑक्यूपेंसी, यानी टोटल 480 पीपल केम टू वॉच द मूवी. सो एज आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 शोज जिसके टिकट्स महंगे हैं, मैं उनमें लोगों को 100% फुल करूंगा. तो अगर इसमें 100% आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ 480, 200 people are coming to watch the movie in this show. 200 लोग यहां भी आ गए, और जो बाकी बचे 80 हैं वही आ रहे हैं बस लेट नाइट शो में. सो टोटल हाउ मच रेवेन्यू विल बी जनरेटेड? देखो, 25 into 2, यानी दिस विल बी 50, राइट? सो 50,000 revenue is generated from this. Similarly, 50,000 of revenue is generated from this, and 16,000 of revenue is generated from this. So total revenue is 1,16,000. So this is the total revenue generated. Out of this, what is my expenditure? The expenditure that we are meeting, as we are running, there are 3 shows. So the value of X will be 3. So it will be 5,000 into 3, which is 15,000. So 10,000 ye or 15,000 ye. So total cost of running the shows is 25,000. So subtract 25,000 from it. तो जब आप इसमें से 25,000 subtract कर लोगे तो 91 के टाइप्स कुछ आना चाहिए. Okay, so the maximum profit the movie theater owner can make is 91,000. So this was question number 5. Okay, 91,000. Very good question, right? Good and easy question. Easy to handle question. Next we have is question number 6. So question number 6 is, FS food stall sells only chicken biryani. Very nice. Okay. If FS fixes a selling price of rupees 160 per plate, 300 plates of biryani are sold. अगर मान लो 160 rupees उसने कॉस्ट रखा, the total number of plates that will be sold will be 300. ठीक है. For each increase in the selling price of 10, यानी अगर मान लो मैंने 170 कर दिया, 10 fewer plates will be sold, यानी 290 plates will be sold. अगर आपने 10 rupees increase कर दिया, so 290 will be sold, and it will go on like similarly for each. लेकिन सिमिलरली फॉर ईच डिक्रीज, यानी अगर मान लो मैंने 10 रुपीज डिक्रीज कर दिया, सो 10 मोर प्लेट्स विल बी सोल्ड. और ये ऐसे ही होता जाएगा, जितना आप 10 डिक्रीज करते जाओगे प्राइस, तो आपका वैसे नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा होगा. FS incurs a cost of rupees 120 per plate biryani and he has decided that the selling price will never be less than the cost price. यानी जो मिनिमम प्राइस वो रखेगा बिरयानी का, that will be 120 rupees. Below 120 he'll never go to, मतलब वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो बिरयानी है that will be sold below 120. Moreover, due to capacity constraint, more than 400 plates cannot be produced. देखो ये बात की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऑलरेडी देखो कि 120 के नीचे मेरा प्राइस जाएगा नहीं, ठीक है, तो मैं उतना ज्यादा बिरयानी बनाऊंगा भी नहीं, तो इस लाइन की कोई मतलब भी नहीं है. If the selling price on any given day is same for all the plates and can be only a multiple of 10, then what is the maximum profit that
एफ एस कैन बी। तो आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, सो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द टोटल प्रॉफिट दैट वी वांट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, per plate how much profit the seller is making and what is the total quantity of plates he is selling. जो मेरा प्रॉफिट का वैल्यू होगा, ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट का वैल्यू होगा, इट विल बी व्हाट, पर प्लेट प्रॉफिट, ओके, पर प्लेट प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर्स ऑफ प्लेट. सो आई हैव टू व्हाट, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, पर प्लेट इनटू टोटल को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, वी वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट. सो पर प्लेट प्रॉफिट इनटू टोटल को मैक्सिमाइज करना है. और अगर आप एक चीज देखोगे तो यहां पर देखो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, when the cost price is fixed, okay, cost price is 120. So when my cost price is 120, okay, and if I'm selling it at 150, the profit is what, the profit in this case is 30 rupees. If I'm selling it at 160 rupees, the profit in this case is what, it is 40 rupees. If we are selling it at 170, the profit is what, it's 150. तो अगर आप देखो number of plates and the profit, ठीक है, number of plates and the profit is always 340. 310 plus 30 is 40, 300 plus 40 is 340, 290 plus 50, यानी n plus p is constant. And what we have to do, we have to maximize the value of n into p. तो अगर n plus p same है, n plus p का sum constant है, and if we have to maximize the value of n and p, so when this will happen, this will happen if, or the maximum value of n and p will be getting if n is equals to p. ठीक है, अगर n और p बराबर हो जाए ना, then it will be giving a maximum value. जैसे अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो मैंने बोला if suppose x plus y is equals to 10, so when will be having the maximum value of x into y, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 1 into 9 हो सकता, 2 into 8 हो सकता, 3 into 7 हो सकता, 4 into 6 हो सकता, और it can be 5 into 5. 1 into 9 is 9 only, 8 into 2 is 16, 7 into 3 is 21, 4 into 6 is 24, 5 into 5 is 25. So if I want to get the maximum value of a into b or x into y, ठीक है, तो x into y का maximum value कब मिल रहा है, when both are equal. So same logic we have to apply here also. N plus p is fixed, right? The value of n plus p is fixed and we have to maximize the value of n into p. So in which scenario it will be? It will be if your n is equals to p. तो अगर मेरा n और p बराबर हो जाए, so it will be what? It will be 170 and 170. So the value of n is 170 and the number of plates is also 170. So what will be the total profit? The total profit will be simply the product of it. So 17 square is 289. So it will be 28900. Okay, very good question, right? Question number 7. Question number 7 is, a farmer has a triangular plot of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long and the other two sides are equal. So it's an isosceles triangle. So it has been given that a triangle कौन है, एक किसान है, ठीक है, and he has a triangular field. पता नहीं ऐसे ऐसे फील्ड कहाँ से लेकर आते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ट्रायंगुलर नहीं होते. And the length of the base is 300 meters. Okay, so this is 300 meters. And these two sides are equal. Okay, the length of this and the length of this are equal. The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. और इसका जो base है, ठीक है, this is 200. To counter the adverse effect of the climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and the other half will be the outside, yani which he will purchase at the market rate from his neighbor. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base of the circumference of the pond and touches the two equal sides of the triangle from inside. Okay, so that he decided that he will be forming a circular pond. अब इसका जो सर्कुलर पॉन्ड होगा वो कैसा होगा, द डायमीटर ऑफ इट, ठीक है, इट विल बी विद इन दिस बेस एंड इट शुड बी टचिंग बोथ द साइड्स. ठीक है, सो समवॉट लाइक दिस द सर्कुलर पॉन्ड विल बी. सो दिस एरिया ही हैज टू परचेज. तो ये एरिया अगर मुझे चाहिए, सो हाउ टू गेट, सिंपली अगर इफ बाय एनी मीन्स इफ आई एम एबल टू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल,
By any means, if I'm able to get the radius of the circle, my job is done. So can we get the radius of the circle? Let's try. See, this complete length is 300. As it's an isosceles triangle, so it will be 150 and it will be 150. Okay, this is 200. In this right angle triangle, this is 150, this is 200. Okay, so 50 into 4 here, 50 into 3 here. So this must be 50 into 5. So it will be 250. So if I'm naming it, okay, if this is A, this is B, and this is C. So if I want to get the area of ABC, what will be the area of ABC? It will be half of 200 into 150. If we want to get the area of triangle ABC, it will be 200 into 150. Similarly, what I am doing, I am connecting this point. So will this be a 90 degree? Radius at the point of contact will be 90 degree. So ये हो गया 90 degree. So if this is 90 degree and suppose this is R. So again, can we get the area of this triangle? So it will be half of R into 250. Okay. So half and half will get cancelled. When we'll simplify 20, 50, यानी ये हो जाएगा 5 times में, this will be 4 times में, 5 and this is 3 times. So now we have the value of R. So R is what? It is 12. So radius of the circle is 12. अब radius आ गया तब तो कुछ बचा ही नहीं. It's very easy now to get the answer. So if your radius is 12, so what will be the area of the half circle? So area of the half circle will be, it will be 1 by 2 into pi, which is 22 by 7, okay, into r square, which is 12 into 12. So this is the area of the circle. Okay. In this area of the circle, if I'll multiply 1400, now why we are multiplying by 1400? Because we have to find the price, right? If the market rate per square feet of the land is 1400, okay, per square feet का price क्या है? 1400. So total this much square feet of land we have to purchase. Simply multiply it by 1400 so that we get the total cost. तो इसे आप simplify कर लो, ये और ये cancel हो जाएगा. So it will be 200, right? Sorry, finally only 100 is left. So 12 into 12 is 144. 144 into 22. Okay, let's multiply. 4 2s is 8. 4 2s is 8. 288. 288. So we'll have a 8 6 1 and 3168. Okay, so this one will be the answer. 316800 will be the answer. So it was only about the diagram. अगर आपने एक बार अच्छे से diagram बना लिया हो जाएगा. Wow. So next we have is question number 8. Question number 8 क्या है? कौन सा चैप्टर से? Data sufficiency. Data sufficiency plays a very important role when you are preparing for XAT exam. XAT में data sufficiency से question होते ही होते. अब बच्चे पूछते सर data sufficiency ना बहुत difficult chapter है और we are not able to get the right answer. तो डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा चैप्टर है ना विच इज अ वेरी गुड चैप्टर टू रिवाइज. तो अब डायरेक्टली आप कभी भी डेटा सफिशिएंसी पढ़ना स्टार्ट मत कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आपका सारा कंप्लीट है या नहीं, बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, अलजेब्रा, ये सब सारा बेसिक कंप्लीट है या नहीं. वंस यू आर डन विथ ऑल द बेसिक्स, ओके, देन गो फॉर दिस डेटा सफिशिएंसी चैप्टर, क्योंकि दिस टेस्ट ओनली योर बेसिक्स. डेटा सफिशिएंसी में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं कि आपको क्या क्या जरूरत होगी आंसर ढूंढने के लिए. अगर आप वो ढूंढ पाते हो ना, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. A group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the two opposite midpoints of the two shorter sides. Okay, so let's draw a rectangular field first of all. ठीक है. सो राजू एंड रतन, ठीक है, एक तो प्रेम रतन था, एक राजू एंड रतन था. सो राजू एंड रतन, सो आई एम जस्ट राइटिंग रैट. सो राजू एंड रतन आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट मिड पॉइंट्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स. Raju has the ball who passes to Rivu. So initially Raju had the ball, okay, and he is passing to Rivu. Or Rivu क्या है, sorry, Rivu, who is standing somewhere on the longer sides. तो somewhere on the longer side, यानी या तो वो यहाँ है या तो वो यहाँ पे, somewhere on the longer side. Suppose यहाँ पर Rivu stand कर रहा है.
Rivu holds the ball for 3 seconds. ठीक है, so Raju is holding the ball for 2 seconds, Rivu is holding it for 3 seconds and passes to Ratan. Next, Ratan holds the ball for 2 seconds. ठीक है, इसने भी 2 seconds के लिए बॉल को अपने पास रखा है. सॉरी, ये होल्ड नहीं कर रहा यार. So Ratan holds the ball for 2 seconds and he is passing to Ratan. Back to Raju. So ball यहाँ से गया, then यहाँ गया, and then this. So now it is forming a triangle. ऐसा ही है ना? The path of the ball from Raju to Rivu makes always 10 meters per second. और जिस स्पीड से बॉल ये हो रहा है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बॉल हैज बीन गिवन, इट इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकेंड. And the ball always moves on a straight line along the ground. Consider the following 2 additional piece of information. The dimension of the so this is my statement 1. ठीक है, यहाँ तक question है. Now this is the statement 1. The statement 1 says that the dimension of the ground is 80 into 50 meters. Okay, so in statement 1 we have the dimension of the ground which is 80 into 50. Statement 2, the area of the triangle formed by Raju Ratan is 100 square meters. और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1000, ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है ना, 1000 मीटर स्क्वायर. सो कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द फॉलोइंग. हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट टेक राजू टू गेट द बॉल बैक सिंस. यानी राजू के पास कितने टाइम के बाद बॉल आ जाएगा. तो देखो, वी नो द स्पीड एंड वी नो द टाइम. हमें यह भी पता है कि कितने स्पीड से बॉल ये कर रहा है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने होल्ड कर रखा है. अगर मैं किसी तरीके से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, सपोज इफ आई एम एबल टू गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस तो पता ही है, सॉरी, अगर मान लो मुझे ये और ये डिस्टेंस मिल जाए, अगर ये डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा, यहां से आने में कितना टाइम लगा होगा. सो वी हैव टू गेट दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज वी हैव और व्हाट आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन इट हैज बीन गिवन. एक और चीज बोला गया था, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, आई थिंक आई मिस दैट लाइन. This one is perpendicular. Okay. So which of the following information I need? So देखो, if I have the first information only. First information क्या बोल रहा है कि अगर ये 80 है और ये 50 है, can I get the area of the triangle? अगर मेरे पास ये information है तब भी मैं area of the triangle find out कर सकता हूँ. कैसे? 80 into 50 will be 4000. यानी complete area of this rectangle is 4000. So if the complete area of the rectangle is 4000, half of the area will be 2000. तो अगर ये एरिया 2000 है तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी व्हाट, इट विल बी हाफ ऑफ दिस. ठीक है, इसकी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और इसके एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और हाइट और लेंथ तो दोनों सेम होगा. सो द एरिया ऑफ दिस विल बी 1000. सो इफ आई हैव ओनली दिस इंफॉर्मेशन ना, मैं आसानी से एरिया निकाल सकता हूं. यानी मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन की इतनी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मान लो इफ आई एम सिंपली गिविंग यू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1000, तो इसको यूज करके क्या आप ये डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? नो. If I'm just giving you the second information, कि using the second information, can you tell me what are the dimensions of the rectangle? यानी अगर सिर्फ मैंने बोल दिया okay, the area is 1000, so can we get the dimensions? No, we can't. लेकिन अगर मेरे पास dimensions है, definitely I can get the area. तो if we have the dimensions, ठीक है, तो आप ये भी निकाल सकते हो, it will be 80. Using Pythagoras आप ये दोनों भी निकाल सकते हो. So if I have this data, definitely I can get the value कि हाँ उसे बॉल को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा. और ये डेटा की जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा ना, तब भी ये डेटा तो मिल ही रहा है. यानी just by using statement 1 alone we can get the answer. So 1 alone is sufficient to solve the problem. Okay. Question number 9. The least common multiple of a number and 990 is 6930. Okay, so they are saying that we have a number n और इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी LCM of n and 990 has been given which is 6930. ठीक है, LCM इनका है 6930 and the greatest common divisor of that number and 5 ये. और इन्होंने बोला कि जो HCF है, HCF of n and 550 is 110.
तो अगर इनका HCF 110 है, so we can write n will be what? n will be of the type 110 into k. ठीक है, n will be of the type 110 into k, where k will not be any value or any number which is a multiple of 5. k कुछ भी नहीं हो सकता, it can't be any value which is a multiple of 5. ओके okay? तो अब मेरे पास ये दो नंबर्स है, आई हैव द नंबर्स 110k एंड 990, एंड इफ वी विल गेट द एलसीएम ऑफ इट, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, इट शुड बी 6930. सो लेट्स गेट द नॉर्मल मेथड ऑफ एलसीएम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 110 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इट विल बी k टाइम्स एंड इट विल बी 9 टाइम्स. सो फर्दर इसे एक बार k से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 9. सो एलसीएम विल बी व्हाट, 110 into k into 9 should be equals to 6930. So 0 0 cancel हो जाएगा. 11 के टेबल में it will be 66 times, right? So 66 is 6 and 33. It will be 3 times 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 7. Just 66 is 6, 33 3. So 63 9 यानी 7. So the value of k that we are getting is what? K is 7. Okay, the value of k will be what? It will be 7. So if my k is 7, so what will be the number? The number will be 770. Okay, the number is 770. So what is the sum of the digits of the least possible value of that number? Sum of the digits, यानी अगर मैं सारे digits को add कर दूं, least possible, देखो k के ऐसे कुछ और भी values हो सकती है, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है. जैसे k की वैल्यू मैंने 7 रखा, ठीक है, ये 7 into 3 भी हो सकता था, 21 भी हो सकता था, ये 7 into 9 63 भी हो सकता था, बट वी हैव टू गेट द लीस्ट वैल्यू. ओके, तो लीस्ट वैल्यू लेना है, इसलिए मैंने k की वैल्यू 7 रखी. So if k is 7, the number will be 770. अगर 770 है तो आंसर क्या होना चाहिए, it should be 14. Okay, so for question number 9, what the answer is? Answer is option C, which is 14. Next, the roots of the polynomial 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6 are the radii of the three concentric circles. तो यहाँ पर बहुत ये अच्छे से दे रखा है, इन्होंने बोला there is a cubic equation like this, 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6, ठीक है. So this is a cubic equation, a cubic polynomial we have, and the roots of it, ठीक है, means when I'll be equating it with 0, so definitely if the degree is 3, so I'll be having 3 roots of it. So ये जो 3 roots है ना, these will be the radius of 3 concentric circles. So what is the area when arranged from largest to the smallest? ठीक है, तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा अगर आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जब अरेंज करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द रूट्स ऑफ इट. सो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक आउट ऑफ इट. कैसे? यूजिंग हिट एंड ट्रायल आई विल सी कि इसका एक रूट क्या हो सकता है. ठीक है, यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज कि इसका एक रूट क्या हो सकता है. तो सपोज इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, कैन वी कीप द वैल्यू ऑफ x एज -1? नो, x can't be -1. Why? Because that is a radii. So a radii can never have a negative value. तो x की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती. So let us take that one of the root is 1. तो अगर मैंने 1 रखा तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 2 into 1 is 2 minus 11. So you'll have 2 minus 11 plus 17 minus 6. So minus 11 and minus 6 17, तो 2 is left. It means that 1 तो इसका एक रूट नहीं है. अगर 1 रूट नहीं है then try with another number, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 2. तो अगर मान लो मैंने 2 रखा, so x cube is 8, so 8 into 2 is 16 minus 11 into 4 is 44 plus 34 minus 6. ठीक है, इसको सॉल्व करो, you'll be getting 0. It means that one of the root of this equation is what? It's 2. Okay, one of the root is what? It's 2. तो अगर 2 इसका रूट है, इसका मतलब एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर इसका x minus 2 होगा. One of the factor of this is what? It is x minus 2. तो अगर इसका एक फैक्टर x minus 2 है तो इसको x minus 2 से डिवाइड कर लेते हैं. So let's divide 2x cube minus 11x square plus 17x minus 16, ठीक है, by x minus 2. So first of all it will be 2x square. Okay, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2x cube minus 4x square, 2x cube and minus 4x square. Okay,
फिर माइनस कर लेते हैं, सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस, सो इट विल बी माइनस ऑफ 7x स्क्वायर, राइट, ठीक है, प्लस 17x, so this time we will be multiplying by minus 7x, so it will be minus of 7x square plus 14x. अगेन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, so it will be cancelled, so it will be 3x minus 6, so I think we need only a plus 3, so plus 3 it will be 3x minus 6, so everything will be cancelled. Okay, so this can be written as x minus 2 into 2x square minus 7x plus 3. तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, ओके, सो द 3 रूट्स विल बी व्हाट, एक तो रूट हो गया 2, इसे मुझे क्या करना है 3 इंटू 6 में ब्रेक करना है और प्लस 7 चाहिए, ठीक है, तो 6 और 1 होना चाहिए, आई गेस 6/2 and 1/2. So the radius, now since we have to arrange the we have to get the ratio of the area from largest to the smallest, तो लार्जेस्ट एरिया क्या होगा जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा, सो लार्जेस्ट एरिया विल बी 3, देन विल बी हैविंग 2 एंड देन विल बी हैविंग 1/2, ठीक है, 3 2 1 इसी रेडियस में इसमें, तो इसका स्क्वायर एरिया, अगर रेडियस का रेशियो ये है, सो एरिया का रेशियो क्या होगा, इट विल बी 9:4:1/4, let's multiply all the numbers by 4, so it will be 36:16:1. This is the ratio of the radius. Okay, so the ratio of area will be what, simply square of it. So correct answer to question number 10 will be what, it will be option D. Very good question, right? मजा आया होगा करके. Algebra और mensuration mix किया हुआ था, ठीक है, cocktail किया था इन्होंने. A local restaurant has 16 vegetarian items and 9 non-vegetarian items in their menu. Okay, so 16 veg है और 9 non-vegetarian items in their menu. Some items contain gluten while the rest are gluten free. So out of these food items, some are having gluten and some are gluten free. One evening, Rohit and his friend went to the restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian items and 3 different non-vegetarian items from their entire menu. ठीक है, so whether they are going for gluten or non-gluten ऐसा कुछ mention नहीं है. Simply it has given that कि out of 16 vegetarian foods, okay, out of 16 vegetarian foods, they are opting for 2 different vegetarian foods, and out of 9 non-vegetarian items, they are availing 3 different non-item food. So in how many ways they can do the selection? So Rohit and friend, out of 6 foods, okay, they have to select any 2 of them. For Rohit and his friends, okay, so out of 16 foods available, they have to select any 2. And when they have to select a non-vegetarian item, so out of 9 food options, they can select any 3. So this is the mechanism of selection, or these are the different options available for Rohit. Later, Bela and her friends also went to same restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian items. Now, Bela and her friend are opting for 2 vegetarian items and 1 non-vegetarian item only from gluten-free options. Okay, Bela and her friends are very health conscious and they are opting for only gluten-free options. So out of these veg, कितने gluten-free है मुझे नहीं पता. Suppose I am taking the gluten-free items are M and gluten-free non-veg items are N. So what are the different options that Bela and her friends will have? So Bela and her so plan to choose 2 different vegetarian items. So Bela and her friend, since they are opting for gluten-free options, so it will be MC2 for vegetarian items, and for non-vegetarian items, and 1 non-vegetarian item. Okay, so it will be NC1. So these are the different options available for Rohit. Okay, Rohit and they don't have any issues with gluten or non-gluten, but Bela and her friend only wants to eat gluten-free item. The number of items combination of Rohit and his friend could choose from the given plan was 12 times the number of items combination that Bela and her friends could have. ठीक है, मतलब जो रोहित के पास options है, that is 12 times the options that Bela and their friends have. रोहित एंड फ्रेंड्स के पास जो ऑप्शंस है ना, बेला और उसके फ्रेंड्स के वो 12 गुना है. सो वी कैन से दैट 16C2, तो 16C2 विल बी 16 into 15/2, ठीक है, 16 15 2, ठीक है,
into 9C3, so it will be 9 into 6 into 7, ठीक है, upon 3, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, it will be 12 times the option that they were having. So MC2 यानी m into m minus 1 upon 2 into n. So this 2 and this 2 will be cancelled, ठीक है, 12 भी कैंसिल कर ही लेते हैं, सो 4 और 3, तो यहाँ से 4 उड़ा लो, ठीक है, यहाँ से 3 उड़ा लो, तो अब आपके पास देखो क्या क्या बच गया. सो वी आर गेटिंग 12 इंटू 15 इंटू 7, यही मिल रहा है ना. 4 4 is 16, okay, then I'll have 9 and then we'll have, oh sorry, this is 9 into 8, just a minute. Okay, I'm doing the calculation part again. So it says that whatever options Rohit have, so Rohit have this options, okay, so it will be 16 into 15, okay, by 2 into 9C3, so it will be 9 into 8 into 7, okay, earlier I wrote 6, so divided by 6, okay, because it was 3 factorial, this should be 12 times of m into m minus 1 whole is divided by 2 and into n, तो ये 2 this 2 will be cancelled, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है, ये 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6 गॉन, 3 2 6 गॉन, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 16 इंटू 15 इंटू 7 शुड बी इक्वल्स टू m into m minus 1 into n, m into m minus 1 into n. Again, if we will be observing it very nicely, ठीक है, अगर आप देखोगे m into m minus 1 into n है, तो it might be that m must be 16, अगर m की वैल्यू 16 है तो m minus 1 हो जाएगा 15, ठीक है, and the value of n will be 7, ठीक है, या एक और काम क्या कर सकते हैं, 16 into 15 into 7 को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, so m is 16, is it possible, m is vegetarian, okay, n is 7, so it is feasible, right, m is 16, so m minus 1 is 15, it's feasible, n is 7, okay, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यही assumption कर लिया, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, the answer I am getting is m मान लो ये हो गया 16, okay, and n will be 7, so out of 16 vegetarian items all are gluten free, m क्या है, m जितने भी gluten free है, and out of 9 non-vegetarians and 7 are gluten free, yani there will be 2, yani out of, if I'm selecting this way, okay, so what I'm getting, there are 2 gluten free options, लेकिन there are more possibilities, और possibilities क्या हो सकता है, instead of writing as 16 into 15 we can also write as it is 14 into 15 into 8, ठीक है, 14 into 15 into 8, we can also write it like this ना, so it will be m into m minus 1 into n, so obviously m और m minus 1 तो 14 और 15 में ही डिसाइड करना पड़ेगा, it means that the value of m will be 15 if I am assuming this, and the value of n is 8, so out of 16 vegetarian foods gluten free are 15 और 9 में से 8, यानी again I'll be getting 1 and 1 2, तो चाहे मैं ये कंसिडर करूं या मैं ये कंसिडर करूं, every time I'm getting the same answer, so the answer will be 2, there are total 2 items which are gluten free, चाहे आप ये कंसिडर करो या आप ये इक्वेशन कंसिडर करो, both ways you are getting the option as 2. So in question number 11, okay, the answer will be what? It will be 2. Next we have is question number 12. So question number 12 is saying that consider the system of 2 linear equations as follow, where P and Q are, okay. Next, let's see question number 13. So question number 13 says that consider a 4-digit number of the form ABB. Okay, so we have a 4-digit number of the form ABB. तो अगर आप इसको expand करोगे, suppose I'm just writing the numbers ABB, ठीक है, so if I'll expand, तो अगर आप इसको expand करोगे तो it will be what? It will be
1000 times of A plus it will be 100 times of B plus it will be 10 times of B plus B. Okay, I have simply expanded the number. That is, first digit is A and is greater than 0. Okay, so it is saying that first digit is A and it is greater than 0. So ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. And the last three digits are all B. Which of the following condition is both necessary also and sufficient to ensure that 4-digit numbers is divisible by A? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेसेसरी भी है एंड एट द सेम टाइम सफिशिएंट इज देयर इज आल्सो सफिशिएंट टू इंश्योर दैट ये जो 4-digit नंबर्स हैं दैट विल बी डिविजिबल बाय A? ठीक है, सो अगर आप इन सभी को ऐड करोगे, दिस इज 100B, दिस इज 10B एंड दिस इज A. सो फाइनली हमारे पास नंबर क्या है? 1000A plus 111B, and this number has to be divisible by A. So what is the bare minimum condition होना चाहिए कि ये जो नंबर है वो A से completely divide हो जाए? So if we'll be using the concept of division theorem, ठीक है, sorry, if we are using the concept of remainder theorem, obviously ये तो completely divide हो जाएगा. This number is completely divided by this. So whatever remainder I'll be getting, that will be because of this. तो मुझे बस ये चेक करना है 11B A. So what should be the number or what should be the different value of B we can have, ठीक है, जिससे A completely divide हो जाए या A इसको completely divide कर दे. तो उसके लिए आप B को क्या रख सकते हो? तो पहला है if B is divisible by A. ठीक है, देखो B is divisible by A है तो क्या ये नंबर A से डिवाइड होगा? हाँ, ये हो जाएगा. बट क्या ये नेसेसरी है कि B शुड ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ A? अगर मान लो मैंने B का कोई और मल्टीपल लिया तो क्या वो A से नहीं डिवाइड होगा? ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट अस टेक एनी नंबर. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग लेट A is 5. Okay, we are taking A is 5. So they are saying that B should be divisible by A. Okay, so imagine, or let's not take 5, let's take it as 3. Okay, so suppose if I'm taking A as 3, if A is 3 and let us take B as 2, so the number we will be getting is 1 into 2 upon 3, which will be 2 upon 3. Is 2 upon 3 divisible by 3? Yes. Yani even if I have taken a number B which is not divisible by A, still I am getting this number divisible by A. यानी ये कंडीशन सफिशिएंट तो है बट ये नेसेसरी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने B का जो वैल्यू है वो A से डिविजिबल नहीं रखा. इफ आई एम टेकिंग B which is not divisible by A, then also it can be divisible by A. इसलिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है. सेम चीज वैसा ही है, अगर B इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, तो B इक्वल्स टू 0 के अलावा भी तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. यानी ये फिर से नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है बट ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर मान लो मैंने A की वैल्यू 3 रखी है तो ये जो 11B है, अगर आप ये 11B को ये करोगे, ब्रेक करोगे, तो दिस विल बी रिटन एज 37 into 3B. सो इफ आई वांट कि ये जो नंबर है 37 into 3B शुड बी डिविजिबल बाय A, सो आइदर माय A शुड बी 37. ठीक है, आइदर माय A शुड बी 37. अगर मेरा A 37 या 37 का कोई मल्टीपल ये हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है, तो ये डेफिनेटली डिवाइड कर लेगा, लेकिन 37 इज अ प्राइम नंबर. और व्हाट कैन हैपन, ये जो A है इट शुड बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 3B, या आपका ये जो 3B है ना वो A से डिवाइड हो जाए. अगर आपका 3B A से डिवाइड हो गया तो आप B की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, इट विल नॉट मैटर. सो नेसेसरी कंडीशन क्या है, दैट दिस 3B शुड बी डिविजिबल बाय A. If your 3B is divisible by A, obviously this number will be divisible by A. So the necessary condition is what? 3B is divisible by A. अगर ये कंडीशन हुआ ना तो आप B की चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, yes this number will be divisible. Okay, so question number 13 का आंसर क्या होगा? It will be option E. Next we have is question number 14. Question number 14 क्या है देखो, consider a right angle triangle ABC, right angled at B. Two circles each of radius r are drawn inside the triangle. So the radius of the circles are given, it's r, such a way that one of them touches AB and BC while other touches AC and BC. ठीक है, एक AC को टच कर रहा है और एक BC को टच कर रहा है. The two circles touch each other. See the image below.
उन्होंने बोला, अगर आपको ये नहीं बोलता ना तो आप बिलो इमेज नहीं देखते, ठीक है। सो थैंक्स टू देम कि वो आपको याद दिला रहे कि आपको इमेज भी देखना है। मीनवाइल लेट मी ड्रिंक सम वाटर। So if AB is 18 centimeter and BC is 24 centimeter, then find the value of R. तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये 18 है, ये 24 है, तो मैं ये तो फाइंड आउट कर सकता हूँ 6 into 3 6 into 4, so this will be 30. So the length of AC is 30, but we have to get the value of R. Okay, let's try to get it then. Suppose I'm using this pen, so this is the center, suppose this is R. Okay, so this will also be R. If I'll connect this, okay, so this is R, this is R, R, so total this length will be what? This length is total 3R. Suppose this is X. Okay, suppose this is X, so this will also be X. चलो ऐसा दिख जा रहा है. Suppose this value is X, then this value is also X. Okay, and what we have done, from a far away point, okay, we have drawn two tangents on this circle, so the length of the tangent will be same. ठीक है, अगर ये X है तो ये भी X है, and if you will connect this line, so the angles will also be same. This angle and this angle will be same. The measure of this smaller angle and this smaller angle will be same. Or we can say that this line will act as an angle bisector. तो अगर ये complete angle मान लो 2 theta है, okay, suppose अगर ये 2 theta है, so this will be theta and this will be theta. So from the bigger triangle we can say that tan 2 theta, ठीक है, in the bigger triangle we can say that tan 2 theta is what? Tan क्या होता है? Perpendicular by base, so it is 18 upon 24, or it is 3 upon 4. Similarly, if I see the smaller triangle, this one, so this angle is theta. तो अगर ये angle theta है, so we can say that in the smaller triangle tan theta will be what? It will be r upon x. ठीक है, tan theta will be what? It will be r upon x. This is your radius and this is your x. tan 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है? It will be 2 times of tan theta into 1 minus tan square theta. Let's place it here. So we'll be having this equation: 3 by 4 equals to 2 times of r by x upon 1 minus r square upon x square. So for our easy approach, okay, I'm just writing r upon x as a. So now we'll have a quadratic equation. Okay, so we'll be having 3 by 4 minus 3 by 4a square equals to 2a. I have simply assumed r upon x as a. So we'll be having a quadratic equation. It will be 3 by 4, 3 by 4. So we can say that it will be 3a square, okay, minus 8a minus 3. Just a minute. So it is already here. Minus 3 is equals to 0. So I need a 9 and 8. So 9 and 1, I guess. Minus 9 and 1. So minus 9. The two roots of it will be what? Solve this quadratic equation and get the roots. So two roots will be what? So 3 into 3. So minus 9 we have to get, and we have to get minus 8. So it will be minus 9 and 1 upon 3 upon 3. Okay. So 1 will be minus 3 and 1 will be 1 by 3. Again, negative value तो होगा नहीं, because both your r and x are some dimensions. ठीक है, लेंथ है कुछ, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगा. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ r अपॉन x इज व्हाट? r अपॉन x इज 1 upon 3. r upon x is 1 upon 3. And when you'll see this equation, 3 times of r plus x is complete, it is equals to 24. So if you'll write like this, 3r plus, so x will be what? X will be again 3r. From this equation, x will be again 3r. It should be equals to 24. देखो ये equation 3r and x, it's total 24. So we'll be having the value of r as what? It is 6. Oh, sorry, it is 4. The radius of the smaller circle will be what? It will be 4. Very good question, right? Good combination of trigonometry and geometry. So question number 14. Next we have is question number 15. So what this question is,
A king has distributed all his rare jewels in 3 boxes. ठीक है, उसने अपने क्या किया, 3 boxes में अपने jewels को distribute किया है. Next, the first box contained 1/3 of the rare jewels. तो टोटल जितने भी ज्वेल्स थे उसका 1/3 इसमें आ गया. While the second box contains k/5 of it. For some positive integer value of k, and the third box contains 66 rare jewels. Okay. So now see, since I have to get 1/3 of it and k/5 of it, यानी मुझे एक बार 3 से डिवाइड करना और एक बार 5 से डिवाइड करना है. So I am assuming let the total jewels the king has is 15x. Let the total jewels that king is having is 15x. So 1/3 इसमें आ गया, यानी first box is containing how many jewels? It should be 5x. Second box should contain how many jewels? It should be kx. कितना हो जाएगा? 3kx क्या? हाँ, it will be 3 times of kx. Okay, and plus 66. If I'll add all the jewels, it should be again equals to 15x. Or we can say that 3kx plus 66 is equals to 15x. Or 66 is equals to 15x minus 3kx. So what are the values of k we can take? देखो आपको k की वैल्यू ऐसी भी रखनी है ना कि ये इसको डिवाइड कर ले, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी डेसिमल्स नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस नहीं हो सकती. x हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. व्हाई? बिकॉज ज्वेल्स जो है ना दैट विल बी अ नंबर ऑफ पीसेस, इट वोंट बी फ्रैक्शंस. So what is the different values of k we can take? So as the fraction is k upon 5, so हम k की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? k can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4. 5 तो नहीं हो सकता. So these are the different values of k available, 1, 2, 3 and 4. So suppose if I am taking k's value to be 1, तो क्या होगा देखो, 15x minus 3x. So 15x minus 3x यानी we are getting this 66 is equals to 12x. So if I'll solve this, I'll be getting x as decimals or fractions. तो ये तो आंसर नहीं है. अगर आपने k की वैल्यू 2 रखी तो 3 into 2 is 6. So 3 into 6 यानी 15 minus 6 यानी 9x. तो अगर मान लो ये आ रहा है 66 equals to 9x, again the value of x will be fractions. If you are keeping k's value to be 3, so 3 into 3 is 9. So 15, just a minute, oh sorry, it will be 10x. Sorry, it will be 10x, right? So if suppose I am keeping the value of k as 1, ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 1 है, so what I'll have 10x minus 3x, so it will be 7x. तो क्या 66x 7x के इक्विवेलेंट हो सकता है? नहीं. If you solve this, you'll be getting the value of x as fractions or decimals, which is not feasible. If I take k's value to be 2, so 3 into 2 is what? It's 6. So 10 minus 6, it will be 4x. Again 4x is not a multiple of 66, मतलब 4 into something will not give you 66. अगेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेसिमल्स आ जाएगी. अगर आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, so 3 into 3 is 9x. So this will give x equals to 66. So is it feasible? Yes, it's always feasible. x equals to 6 feasible है. ठीक है. In that case 15 times of x I'll be getting a natural number. अगर मान लो मैंने k की वैल्यू 4 रखी तो क्या होगा? 10x minus 4 into 3. इस केस में तो नेगेटिव ही आ जाएगा. So the value of x that we can take is 66. So if my x is 66, total number of gels will be what? It will be 15 times of it. So 15 times of 66. 9 कुछ ऐसा है? Yes, 9 sir. So this was question number 15 for you. So next question is from DI. Okay, so we have question number 16 and 17 based on this information. So what information has been given? Let's read it out. So it says that read the following scenario and answer the 2 questions that follow. Now, so Aman has came to market with rupees 100. Okay, so Aman came to market and how much total he has? The money that he is carrying is rupees 100. If he buys 5 kilograms of cabbage and 4 kilograms of potato, he will have 20 left. So let's suppose that the price of cabbage is C rupees and price of potato is P rupees. So it says that when he'll be buying 5 kgs of cabbage, so it will be 5 times of C, okay, plus 4 times of P. So this should be equals to what? This should be equals to 80. Why? Because he went to the market with 100 rupees and when he is returning back, so he has 20 rupees left with him. So 5 times of cabbage price plus 4 times of potato should be 80. Or else
if he buys 4 kilograms of cabbage, so instead of 5, if he's buying 4 kgs of cabbage and 5 kilograms of onion, let the price of onion be O rupees, okay, he will have 7 rupees left, means the total value of it will be what? It will be 93. The per kilogram prices of cabbage, onion and potato are positive integers, okay. So the value of C, P and O are positive integers, and any type of these vegetables can only be purchased in positive integer kilogram or none at all. Matlab, if you have to buy the potato, for example, so either I can buy 5 kgs or I can buy none. Okay, it says like that. So it can't be that you are buying 5.5 kg of potato. Okay, it has to be an integer quantity. The prices are also integer, and the quantity that which we are purchasing, that will also be an integer. Now let's focus on the first equation. So first equation says that 5 times of C plus 4 times of P is equals to 80. Now if you closely observe this equation, okay, so this 80 is a multiple of 5 and this number is a multiple of 5. See, 80 is a multiple of 5 and this number is 5 times of C, so obviously this will be a multiple of 5. So it will mean that this will be a multiple of 5. ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? If this number is a multiple of 5 and we are adding another number to it, and whatever result I am getting, that is also a multiple of 5. So if this is a multiple of 5 and this is a multiple of 5, so this should also be a multiple of 5. Means whatever may be the value of P, it should be a number that is a multiple of 5. अगर ये 5 का multiple है तो ये भी 5 का multiple होगा, then only the resultant is also multiple of 5. Okay, so the different values of P that we can take is multiples of 5. So we can have 5, we can have 10, okay, we can have 15, or can we have 20? Yes, we can even have 20. Okay, but in that case your cabbage value will be 0. Sorry, will not be having 20. Okay, so these are the different values of potato we can have. Either it can be 5, 10 or 15. Now suppose if the price of potato is 5. So if the price of potato is 5, what will happen? So 4 times of 5 is 20. So price of cabbage will be what? 5C will be equals to 60. So it means that price of cabbage will be 12 rupees. If the price of potato is 5, then the price of cabbage is 12 rupees. Now is it getting satisfied in this equation? Now this will be what? This will be 4 times of C. So 12 times of 4, it will be 48. So if this is 48, this will be 45, because 48 plus 45 is 93. So if this is 45, then the price of onion will be what? Price of onion will be 9. So if I am taking the potatoes price to be 5, okay, I am getting these values. Let us take what will happen if the price of potato is 10. So if the price of potato is 10, suppose if we are taking price of potato as 10, so it will become 40. So 5C will be equals to 40. So the value of C will be what? In that case, it will be 8. If the potato value we are taking as 10, okay, in that case, the cabbage value will be 8. Now 4 times of cabbage will be what? It will be 32. Okay, 4 times of cabbage means 4 8s are 32. So if I am subtracting 93 minus 32, okay, so 93 minus 32 will be what? It will be 61. So 5 times of onion equals to 61. Is it a feasible value? No. Why? Because we can't buy onion in fractions. We have to buy it in integer number. Prices can also not be in any fractions. So 5 times or 5 kgs of onion can never be 61. It means that the value of 10, we can't take this value 10. If suppose what will happen if we are taking price of potato is 15. So 4 into 15. Okay. Now let's see the another case where we are taking the price of potato as 15. Just a minute. Okay. So if we are taking it as 15, so 15 fours will be 60. In that case, it will be what? It will be 4. Again, 4 into 4 will be 16. 93 minus 16 is what? It will be 83. It will be 77. 93 minus 16 is 77. 5 ka multiple to nahi hota. It means that the value of potato 15 is also not feasible. So the only value of potato that is feasible will be what? It will be 5. Okay, so the value of potato is 5, and comparing with the two different equations, we can get the values of cabbage as 12 and onion as 9. So these are the different values. Okay, again, what logic we have used? Okay, simply if this number is a multiple of 5 and this number is a multiple of 5, so it has to be a multiple of 5. So if this number is a multiple of 5, it means that P should be a multiple of 5. So the different values of P we can have is 5, 10 and 15.
then we started off with p's value to be 5. If I'm taking p's value to be 5, each and every condition of the question is getting satisfied. But what is happening if I'm taking with 10? Okay, so I'm not getting an integer value price of the onion. Onion का price क्या आ रहा है? Fraction आ रहा है. Similarly, if I'm taking 15, in that case also the price of onion that I'm getting is a fraction. तो fraction तो हमें लेना नहीं है. Okay, so it means that these will be the prices. Cabbage is 12 rupees per kg, potato is 5 rupees per kg, and onion is 9 rupees per kg. So from the given data, we have drawn out this data. Now, once we have deduced it, the data, let's use them in the questions. Now, the question number 60. Aman decides to buy only onion in whatever maximum quantity possible. Okay. So, total money he is having is 100 rupees. What was the price of onion? Onion was 9 rupees kg. Potato was 5 rupees kg and cabbage was 12 rupees kg, right? With the money he has came to the market with, how much money will be left after the purchase? Now, what is the maximum amount of onion that he can buy? The maximum amount of onion he can buy is 11 kgs. 11 nines are 99 hota hai. Okay, if the price of onion is 9 rupees, so out of 100 I can buy 11 kgs at most. So, agar main 11 kgs kharid raha hu, okay, the money spent will be 99. So, how much will be left? So, with Aman, only 1 rupees will be left. So this is question number 16 for you. Once you have concluded or when you have understood the data, ठीक है, BI का यही होता है, एक बार आपने डेटा अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें से लॉजिक फाइंड आउट कर लिया, डेटा फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, डेटा फाइंड आउट कर लिया, it is very easy to answer the questions then. So answer to question number 16 is what? It is answer E. Next, Aman decides to buy only onion and potato, both in positive integer kilogram, okay, in such a way that money left with him after the purchase will be insufficient to buy a full kilogram of either of the two vegetables. देखो, price of potato is 5 rupees, price of onion is 9 rupees. तो अगर मान लो if Aman is left with money that is less than 5, अगर अमन के पास इतना पैसा बच रहा है that is less than 5, so he'll not be able to buy more onion and potato. Okay, so suppose he is buying onion x kgs. Suppose onion is being bought x kgs and potato is y kgs. What was the money that he will be paying for onion? Will it be 9 times of x? And for potato, it will be 5 times of y. Now this value, okay, this value needs to be what? It needs to be less than 96. Can it be 95? Yes, it can be 95. Because if it is spending 95, तो उसके पास 5 rupees हो सकता है, ठीक है. लेकिन इन्होंने क्या बोला? Sorry, it will be more than 96. This value will be what? It will be more than 96. ठीक है, ये 96 से ज़्यादा होना चाहिए और equals to 96 भी चलेगा. Either it should be more than 96 or equals to 96. In that scenario, he'll not be able to purchase more of onion or potato. ठीक है, okay. So this is 9x plus 5y is equals to, so एक केस मान लेते हैं where 9x plus 5y is equals to 96. ठीक है, so let us take the first case. So I'm writing the first case. So 9x plus 5y is equals to, suppose it is 96. ठीक है, तो 9x plus 5y अगर 96 है, so what are the different values of x and y that can satisfy this equation? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, लेट्स ट्राई विद द वैल्यूज ऑफ x. सो x क्या हो सकता है? x कैन बी एनी इंटीजर, राइट? ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट्स ट्राई विद 1. सो 9 इंटू 1, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, सो इससे क्या होगा? 9 इंटू 1 इज y, सॉरी 9 इंटू 1 इज 9. 96 माइनस 9 इज वॉट? इट विल बी 87. ठीक है, 96 minus 9 is 87. It will not be a multiple of 5. It means that y will be a fraction. So x की value 1 will not satisfy. Okay, if I am taking x values to be 2, 18 minus 96, again not a multiple of 5. If 9 is 3, so 26. 96 minus 27, again it will not be a multiple of 5. Okay, if suppose you are taking x values to be 4. If you are taking x value to be 4, okay, in that case 9 4 is 36. So 96 minus 36 will be 60. So it will mean that the value of y will be what? It will be 12. Okay, I'm writing the values of x and y possible here. The different values of x and y possible I'm writing here. So we can say that if x is 4, okay, then y will be what? It will be 12. Okay. Now next multiple जो हमें देखना है, ठीक है, should we calculate it manually? नहीं. Since we have a 9 here and 5 here, so 9 into 5 is 45. Okay, so अब हमें देखना है कि if this is so this should be 9 times and this should be 5 times. Just a minute.
Okay. So similarly, if I'll trace out the different value of x again, so the next value will be what? It will be 9 9s are 81. Okay. 96 minus 81 will be what? It will be 50. So the value will be, it will be 9 and it will be 3. Okay. If 9x plus 5y is 96, so I am having x and y, these two values of x and y we are getting. Similarly, it can also be कि इसकी जो value होगी 9x plus 5y can also be 97. If 9x plus 5y, suppose it is 97. देखो, the equation says that it can be greater than 96 or it can be equals to 96. So even it can be 97. तो 97 आने के लिए क्या चाहिए? I need a 3. 9 3s are 27 होता है. So अगर ये 3 हुआ, okay, so 27, so it will be 14. तो देखो, if this is 3, it will be 14. ठीक है, so 4 के बाद 3 आया. ठीक है, तो similarly ये क्या होना चाहिए? Next number that will satisfy will be what? ठीक है, simply reduce it by 5. So 9 minus 5 is what? It will be 4. So the next value that will be working will be 9 4s is 36. If I am taking 9 4s 36, okay, so I am getting 9 4s is 36. No, sorry. First of all, I have taken 9 3s, okay, so then we'll be taking 9 8s. So 9 8s will be what? It will be 72. ठीक है, 72 यानी 97 अगर इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 25. सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 5. सो इट विल बी 8 एंड इट विल बी 5. इफ सपोज इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इक्वेशन, अगर मान लो आपने ये इक्वेशन लिया 9x plus 5y इज इक्वल्स टू 98. ठीक है, तो 9 into 2 आता है, यानी दिस विल बिकम 2 और ये क्या हो जाएगा? 80 यानी 16. तो यहां से अगर आपने एक पैटर्न देखा होगा, देखो, दिस इज बिकमिंग 4, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, सो दिस इज 9, दिस इज 8, सो नेक्स्ट टाइम इट शुड बी 7. हो रहा है क्या? देखो, 9 7 जाए 63, ओके, एंड 63 माइनस 98, तो जब आप 63 माइनस 98 करोगे तो इट शुड बी व्हाट? 3 5 एंड इट शुड बी 7. 7 5 are 35, okay, and 63, so 35 and 63 will be work. Next, what we can have? Next equation can be 9x plus 5y is equals to 99. Okay, so 9x plus 45, so 3 4 3 2, then it will be 1 12 14 16, then it will be 18. ठीक है, similarly अगर ये पैटर्न देखो तो 9 8 7, so this can be 6. okay, so 9 6 is 54 and it will be what? 54 अगर इसमें subtract कर लोगे so it will be 45, right? So 5 into 11, I think. Just cross check it. 9 6 is 54 and 45, so it will be 99. Sorry, it will be 5, right? यहाँ 5 है, 7 है, so it will be 9. 9 5s are 45. okay, next equation अगर मैं देखूं, so 9x plus 5y is equals to 100. So what are the different values that will satisfy this? 9x plus 5y equals to 100. okay, so I'll be needing either 9 into 5 or 9 into 10. ठीक है, so 9 into 5 45 होता है, so if suppose I'm keeping 5, so 9 into 5 is 45, so it will be 11. And if 9 into 10 I'm taking, so 9 into 10 is 90 and this will be 2. okay, so these are the different possible values of x and y. So these much quantity he can buy. If all such permissible combinations of purchases are equally likely, what is the probability that Aman buys more onion than potato? So in how many scenarios he has bought more onions? Okay, onion is being represented by x, so here we have more onions, in this case we have more onions, okay, and in this case we have more onion. Other cases, do I have more onions? No. So there are total 3 scenarios where we can get more onion, and total how many are there? Cases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So possible ways are 10, but out of that, which one are the desired ways? The desired ways will be 3. So the probability of it is what? It is 3 upon 10. So answer to question number 17 will be what? It will be 3 upon 10. Next we have question number 18 and 19. Again, question number 18 and 19 is from the chapter of set theory. It says that read the following scenarios and answer the 2 questions that follow.
41 applicants have been shortlisted for interviews for some data analyst posts. Some of the applicants have the advanced expertise in one or more fields among the following: data analysis, database handling, and coding. Okay, so the three field of expertise are data analysis, database, and data handling and coding. The number of applicants with different advanced expertise are given in the table 2 into 8. So this information has been provided. The number of applicants with advanced expertise in all the three fields is given as X. Okay, so what is X? X is those students who have expertise in all the fields, means they are good in data analysis also, they are good in database handling also, and they are good in coding also. So first of all, as we have three things, okay, so let's draw the Venn diagram of it. Total number of objects we have is 3, so it will have 3 circles. Okay, now, so suppose this is representing data analytics. This is the circle representing data analysis. This is the circle for database handling. Okay, and this is the circle for coding. Now, what information we have? Data analysis. The total number of students who are interested in data analysis is what? It is 12. Okay, so the value of it is what? It is 12. Database handling में कितने हैं? There are 5 students. Total there are 5 students. Okay, and in coding there are total 7 students. Students who love data analysis and data handling, means if I talk the value of this, the value of this is what? It is 2. Okay, I'm writing it here. So 2 means what? It is common. So this represents those students who are good in data analysis also and data handling also. Database handling and coding. So I'm representing it here. There are 3 students. Okay, and database analysis and coding there are 6 students. And this is X. X is what? X is representing those students who are good in database handling, data analysis, and coding. Okay. Now, first of all, let's see the circle of coding. So, in coding, total we have 7 students. Okay. Total we have 7 students. Okay. Some students will be here, some students will be here, and some students will be here. ठीक है, अब अगर आप ये देखो तो इन कोडिंग वी हैव टोटल 7 स्टूडेंट्स. अगर मान लो अगर मुझे सिर्फ कोडिंग वाले स्टूडेंट्स देखने हैं, सो कोडिंग वाले स्टूडेंट्स मुझे कैसे मिलेंगे? 7 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? इट शुड बी 6 प्लस 3 माइनस एक्स. 6 आर द स्टूडेंट्स जो डेटा एनालिसिस वाले हैं, फिर डेटाबेस वाले 3 स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स जो कॉमन में, तो जो कॉमन स्टूडेंट्स को मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा. सो इफ यू यूज दिस, सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी गेटिंग इज व्हाट? इट इज 2. इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू क्या है? 2. The value of x is what? It is 2. Very easy question है ये. What is the value of x? तो x is what? It will be 2. क्यों 2 हुआ? देखो ये टोटल इसमें 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए. ठीक है, तो ये जो 6 और 3 है इसमें ये वाला पोर्शन ओवरलैपिंग है, तो ये 7 कैसे होगा? देखो आउट ऑफ दिस 6 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, 2 स्टूडेंट्स विल बी हियर एंड ओनली 1 स्टूडेंट विल बी हियर. सो टोटल देयर विल बी 7 स्टूडेंट्स. 4, 2 and 1. Just a minute. Okay, so 4, 2 and 1, it means that the value of x will be what? It will be 2. So इसका मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, those are good in only data analytics and database, it will be 0. ठीक है, क्योंकि इस टोटल काउंट ही 2 है, सारे के सारे बच्चे यहीं पर आ गए. So the count of it will be what? It will be 0. So using this, let's try to answer the question then. What best can be concluded about the value of x? So the value of x is what? It is 2 only. ठीक है, right now we just calculated the value of x is what? It is 2 only. Next, how many people did not have advanced expertise in any of the 3 given fields? ठीक है, so total we had 41 students. If you remember, the total students we have 41, जिसमें से how many students have some expertise? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? Either you can use the formula or you can calculate it manually. So if I'll be using formula, okay. So first of all, I'll be adding the students who are good in data analysis. Then I'll be adding students who are good in database. Then I'll be adding students who are good in coding. From this, I'll be subtracting who are good in data analysis and database both. Then I'll be subtracting those students who are good in database and coding. Then I'll be subtracting those students who are good in data analysis and coding. And finally, I'll be adding the value or the students those are good in all the 3. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, oh sorry, this is not 7,
This is -6. Okay, so we'll be having -6 -2. Just a minute. 3 and 6. Okay, so ये -6 है और ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया. Okay, -6 and -3, it will be -9. So here I'll be having -9. So 7 5, ये देखो 12 और ये 12 12 12 24 24 -9. So 24 -9 will be what? 12 I have, 5 I have, and 7 we have. Okay, so 7 5 is 12. This is 12. So 12 plus 12 is 24. So from this 24 we need to subtract this -6. So it will be what? It will be -9, sorry. So it will be what? It will be 15. Okay, so total number of students who have at least one of the expertise is what? It is 15. 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने थे? 41. तो अगर आप 41 में से ये 15 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, 41 में से अगर मैं ये 15 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या आ जाएगा? 26. सो 26 स्टूडेंट्स आर सच who does not have expertise in any of the three fields. So answer to this question will be what? It will be 26. So this was question number 19 for you. Next question that we have is question number 20 to 22. Now question number 20 to 22 is from the chapters of mean, mode, median. Let's see. Read the following scenario and answer the three questions that follow. The upper hinge of a data set is the median of all the values to the right of the median of the data set in ascending arrangement, while the lower hinge of the data set is the median of all the values to the left of the median of the data set in the same arrangement. For example, consider the data set 2 2 3 4 3 2 6 4 2 7. ठीक है, so when arranged in ascending order it will become, oh sorry, this is the data set 4 3 2. so जब आप इसको अरेंज करोगे it became 2 2 3 4 4 6 7. ठीक है, so I'm writing this data 2 2 3 4 4 6 7. so what will be the median of it? The median is 4. Okay, so median is 4. so what will be the upper hinge? So upper hinge will be the median of these three. So median of these three will be 6, and the lower hinge will be what? The median of 2. So the upper hinge is 6 and similarly the lower hinge is 2. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी राइटिंग द डेटा, उसका मीडियन देखेंगे, मीडियन के जो राइट तरफ है, ठीक है, उसका जो मीडियन होगा, जो डेटा आपके पास है, ऑल द डेटा इन द राइट, उसका मीडियन देखेंगे, दैट विल बी द अपर हिंज, और जो लेफ्ट की तरफ सारा डेटा है उसको देखेंगे, उसका जो मीडियन होगा दैट विल बी योर लोअर हिंज. A student has surveyed 13 of her teachers and recorded their work experience in integer years. Two of the values recorded by the student got smudged and she cannot recall those values. All she remembers is those two values were unequal. So let us write them as A and B, where A is less than B. The remaining 11 recorded as 5, 6, 7, 8, 12. Okay, so I'm writing the data. So actually it is arranged in ascending order. So the data is 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 27 and 29. So this is the data set. Okay, now extra information we have is the minimum value is 2. Okay, the median 12 is the median is 12. Okay, so first of all the median will be 12. Okay, so if the median is 12, it means that if suppose I have total 13 data, ठीक है, तो ये तो मेरा मीडियन हो गया. सो 6 numbers I'll be having on the right side and 6 numbers I'll be having on the left side. So on the right side I have 6 numbers 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो but on the lower side currently I'm having only 4 numbers. It means that कि जो missing data है वो इधर ही होना चाहिए. Clearly it is said that the minimum value is 2. तो ये जो 2 है वो यहाँ आएगा. ठीक है, जो minimum value 2 है वो तो यहाँ आ गया. ठीक है, so this is the value of A. Because A was lesser than B, so it is the value of A. So what will be the value of B? Now extra information we have is the lower hinge is 6.5 or the median of this remaining data 2, 5, 6, 7, 8 and B. Where B will accommodate we don't know currently, लेकिन इन्होंने बोल रखा है जो lower hinge है ना that is 6.5. So 6.5 कैसे आया होगा?
6.5 तब आएगा ओके इफ यू विल बी प्लेसिंग बी हियर, या तो बी आप इस रेंज में रखो, ठीक है। तो इफ माई बी इज समथिंग विच इज इन द रेंज ऑफ 7 to 12, अगर मेरा बी इस रेंज में होगा 7 से 12 होगा, देन ओनली आई हैव दिस लोअर रेंज, सॉरी लोअर रेंज, क्योंकि तभी तो ये मेरा मीडियन की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज दीज टू विल बिकम माई मिडिल नंबर. So the value of b can be what? B can be anything that can lie between 7 to 12. ठीक है, b क्या होने वाला है? b can be any number that will lie between 7 to 12. Why? Because आपका ये median है. So if the median is 6.5, then only this is feasible. और तो feasible नहीं होगा. So this is the different values of b we can have. Now let's try to answer the given questions. Which of the following is a possible value of b? So b की जो range है that is from 7 to 12. ठीक है, b इज लाइंग बिटवीन 7 to 12. सो 7 से 12 के बीच में कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव आंसर एज 8. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 21. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, which of the following can be the average work experience of the 13 teachers? Okay, so let's get back to the data. So हमें देखना क्या है कि what can be the average, तो हमें average ही find out करना है. So for average what we have to do? ठीक है, एवरेज के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द सम ऑफ ऑल डेटा एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल. सो देयर विल बी 13 डेटा, उसका सम निकाल लेते पहले. तो चलो सम निकालते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड दिस. सो 29 प्लस 21 विल बी 50. ठीक है, दिस वन विल बी 40. 50 प्लस 40 इज 90. दिस इज 20. So I'm writing it, जो होता जा रहा है I'm writing it here. Okay, 50 is done, 40 is done and 20 is done. Next again I can see 12, 8 done. Okay, 7 okay, this 7 is 14 is 6 20. So यहाँ तक तो पूरा हो गया, राइट? ये 8 12 हो गया, 16 अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ये 19 हो गया, ये 21. So 16 and 27 is left, तो 37 43. ठीक है. ओके, आई हैवंट यूज द वैल्यू ऑफ बी सो फार, क्योंकि बी की वैल्यू जो है इट कैन लाई इन द रेंज फ्रॉम 7 to 12. सो व्हेन आई ऐड ऑल द डेटा 40 50 90, दिस इज 130 173. सो 173 प्लस बी. एंड व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी? इट कैन लाई बिटवीन 7 to 12. ओके, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम कैन बी व्हाट? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम कैन बी, ओके आई एम राइटिंग हियर, इफ अगर ये 7 लिया आपने तो इट विल बी 180. And the maximum value of sum will be what? अगर आपने ये 12 लिया so it will be 195. Okay, B can be anything इसके रेंज में. तो if I'll be dividing it by number of people, 13. Okay, so 13 into 13 is 169. ठीक है, and it will be 182. 169, 117 and so 182. So nearly it is equivalent to 14, slightly less than 14. ठीक है, 14 से थोड़ा छोटा है. अगर इसको भी देखोगे इट विल बी व्हाट 173, इट विल बी 185 ना. सो इट इज स्लाइटली मोर देन 14, यानी जो आपका एवरेज है समथिंग इट विल बी मोर और लेस नियर टू 14. वॉट एवर माई एवरेज विल बी समथिंग इट इज मोर और लेस नियर टू 14. सो देख लो ऑप्शंस क्या क्या है. 12 तो नहीं होगा, 12.5 नहीं होगा, 13 भी नहीं है. इट इज स्लाइटली लेसर देन 14, मतलब इन द रेंज ऑफ 13.8 13.9 लाइक दैट. 13.5 भी नहीं है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी 14. Next, while rechecking her original notes to re-enter the smudged values of A and B in the records, the students found that one of the 11 recorded work experience value that did not get smudged was recorded wrongly. मतलब अभी इसके पास जो डेटा है उसमें से एक डेटा ऐसा था that was not recorded properly, it was recorded wrongly as half of its correct value. यानी उसमें जो भी चीज मेंशन्ड है, ठीक है, एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है, उसका हाफ मेंशन है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो वहां पर उसका एक्सपीरियंस था 20, इन दैट डेटा इट वाज मेंशन्ड एज 10. आफ्टर री एंटरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड करेक्टिंग द रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू, शी recalculated all the summary measures. The recalculated average value was 15. So what is the value of b? तो अगर एवरेज 15 होगा तो क्या होना चाहिए? 15 into 13 टोटल सम कितना होना चाहिए? 15 into 13 total sum should be what? It will be 150 plus 45. So 195. ठीक है, correctly the number that I was getting, so total average should have, or total sum should have been what? It should have been 195.
सो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको आप स्किप कर सकते हो? अगर मान लो मैंने मिनिमम वैल्यू लिया, मिनिमम वैल्यू वाज विल बी व्हाट, इट विल बी 180. सो 180 में क्या ऐड करूंगा कि इट विल बिकम 195, 15. ठीक है, सो 16 तो नहीं ऐड होगा, हमें मिनिमम अगर भी लेकर चलूं तो मैक्सिमम 15 भी ऐड कर सकते हो. और अगर आपने ये मैक्सिमम वैल्यू लेकर चला 185, तो आपको सिर्फ 10 ऐड करेगा. तो यू हैव, जो आपने नंबर छोड़ा है या जो नंबर का आपने हाफ लिया है, दैट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 15. 10 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा. तो 10 से ज्यादा और 15 से कम कौन सा नंबर है? 12. यानी इस नंबर को मैंने हाफ लिया. हाउ आई डिसाइडेड इट? देखो पहले इन्होंने क्लियरली बोला कि द एवरेज इज बिकमिंग 15. ओके, सो इफ द एवरेज इज 15, सो 15 into 13 I did. I got 195. When I was calculated with the wrong data, the total sum I was getting as will be either 180 to 185. अगर 180 होता, it means that जो वैल्यू हमने छोड़ा है या जो वैल्यू जिसका हमने वैल्यू हाफ लिया है उसमें से 15 मिसिंग है, उसमें और 15 होना चाहिए. एंड इफ आई वुड हैव टेकन द मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू हमने छोड़ा है उसका जो वैल्यू होना चाहिए उसमें और 10 होना चाहिए. मतलब 10 से 15 का रेंज में वो नंबर होना चाहिए जो हमने छोड़ा है या जिसका हमने हाफ लिया है. ठीक है, वो उसमें से या तो हमने 10 या 15 के बीच में नंबर छोड़ा होगा. तो 10 और 15 के बीच में मेरे पास 12 भी है, तो मैंने 12 छोड़ा है और 12 लिया, यानी टोटल नंबर वो क्या होगा? दिस टोटल नंबर विल बी 24. ठीक है, आउट ऑफ 24 वी हैव कंसिडर्ड ओनली 12 और 12 छूट गया था. सो आंसर टू दिस विल बी व्हाट? इट विल बी 12. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22 फॉर यू. Next we have is question number 23 to 25. So read the following scenario and answers the 3 questions that follow. Okay, very good. A T20 cricket match consists of 2 teams playing 20 overs each, numbered 1 to 20. The run scored in any over is non-negative integer. Okay, so negative numbers तो होते ही नहीं है. The run rate at the end of any over is the average run scored up to and including that over. ठीक है, that is run rate at the end of the kth over is the average number of the runs scored in overs numbered इतना, where k lies between 1 to 20. मतलब 1 से लेकर 20 तक overs है. The following table indicates the run rate of a team at the end of some of the overs during a T20 cricket match. Correct up to 2 decimal places where n minus 2 is greater than 1. ठीक है, n plus 6 is less than 20. So this information we have. N a positive integer, it is also known that the team did not score less than 6 runs and more than 15 runs in any over. Okay, so किसी भी over में, ठीक है, in any of the over, the minimum score that will be scored will be 6 and the maximum that can be scored will be what? It will be 15. In any particular over, the minimum run that will be scored is 6 and the maximum that can be scored is 15. Okay, so first of all, using this information, I need to calculate what is the value of n. So at the end of n minus 2 overs, your run rate is 8. And at the n overs, your run rate is 7.4. So if I'll find कि अच्छा चलो n overs में कितने रन बने होंगे, so can I say that in n overs total runs will be what? It will be 7.4 times of n. Till n overs, this much run might have scored. This much run would have been scored. और n minus 2 में कितने रन स्कोर हुए होंगे? It will be 8 times of n minus 2. And if I'll get the difference of these two, will I be getting the runs that would have been scored in these 2 overs? अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, so will I be getting the runs that will be scored in the 2 overs? So what I'll be getting? I'll be getting 7.43 n, ठीक है, minus 8n plus 16, or I'll be getting 16 minus 0.57n. So in these 2 overs, the run scored is 16 minus 0.5n, 57n. Okay. So what can be the minimum amount of run that can be scored? 2 overs में minimum run कितनी हो सकते हैं? देखो, एक ओवर में minimum 6 है, तो 2 ओवर का minimum कितना होगा? It will be 12. It means that this number should be 16 minus 0.57. ठीक है, 12 से तो बड़ा होना चाहिए, 12 से छोटा नहीं हो सकता ये नंबर. एंड द मैक्सिमम दिस वैल्यू कैन बी व्हाट? इट विल बी 30. किसी भी 2 ओवर में, ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ रन इज स्कोर्ड, 16 minus 0.57. नाउ दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 12 एज पर द कंडीशन. सो व्हेन आई विल बी सॉल्विंग दिस कंडीशन, ओके, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग
0.57n, okay, 0.57n is less should be less than what? It should be less than 4, or we can say that n is less than 4 upon 0.57. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो n विल बी लेस देन 7 पॉइंट समथिंग, तो n की जो वैल्यू होगी ना, इट विल बी लेस देन 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n आई कैन हैव, देखो n कैन बी एनी इंटीजर्स, नंबर ऑफ ओवर्स एक इंटीजर ही हो सकता है, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विल बी व्हाट? इट विल बी 7, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस देन, कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n वी कैन हैव? So we can have 7, yes. Can we have 13? No. The maximum value of 7 we can have is 7 point something. तो मैं maximum तो 7 ही रख सकता हूँ integer value. So this is not feasible, this is not feasible, this is not feasible, this is not feasible. Okay, so answer to question number 23 will be what? It will be 7. Now once I got the value of this as 7, ठीक है, so this will be 5 overs, this will be 7 overs, this will be 9 overs, this will be 11 overs, and this will be 13 overs. Now when I'll multiply with the integers, with the run rate, I'll be getting the run total. So 5 into 8 is 40, 7 into 7.49, it will be 7 sevens are 49, 7 fours are, it will be nearly 52. Okay, so in this way case, I got the total numbers. So till 5 overs 40 runs were scored, till 7 overs 52 runs were scored, till 9 overs 73, till 11 overs 93, and till 13 overs 105. So this data I have derived from the question. Now let's directly use this data. So the for question number 23, the answer is 7. Next, let's use the data in question number 24. In which of these pairs of overs the team could have scored 22 runs? ठीक है, कौन सा ऐसा ओवर का पेयर है जिसमें 22 रन स्कोर हो सकते थे? So first option is 6 and 7. Now let's see. It is clearly stated that in till 5 overs 40 runs were there. So 5 के बाद 6 और 7 है. So in these two overs only 12 runs are scored. ठीक है, 5 से 7 there are 2 overs, 6 and 7, and in these two overs only 12 runs have been scored. और एक कंडीशन था कि आप किसी भी ओवर में मिनिमम 6 रन से कम नहीं बना सकते थे. इसका मतलब ये हुआ कि इन 6th and 7th over, ठीक है, the run scored is what? It is 6 and 6. In 6th and 7th over the run scored is what? It is 6. Next देखो, now when I'll have the data of this 8 and 9, till 7 overs we had 52. ठीक है, तो 8 और 9 overs में कितना रन स्कोर हुआ है देख लो. 8 and 9 कितने रन स्कोर हुए हैं? सो फ्रॉम 52 to 73, 21 रन. सो ये भी आंसर नहीं होगा. 8 और 9 में तो 21 रन स्कोर हुए, 52 से 73, सो ओनली 21 रन आर स्कोर्ड इन. नेक्स्ट है 7 and 8. चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट 7 and 8. इन 7 and 8 क्या ये फीजिबल हो सकता है कि हमने इतने कितने रन स्कोर किए? 22. तो टिल 9 ओवर्स अगर मैं ऐसे बात करूं, 8 + 9 ओवर्स में, ठीक है, इन द 8th ओवर एंड इन द 9th ओवर टोटल 21 रन आर स्कोर्ड. 7th ओवर में 6 रन स्कोर्ड है. अगर मान लो मैंने कंसिडर किया कि मिनिमम 9th ओवर में 6 ही स्कोर्ड है, ठीक है, 9th ओवर में मिनिमम मैंने 6 ही स्कोर किया, इसका मतलब 8th में मैक्सिमम रन दैट कैन बी स्कोर्ड विल बी 15. ठीक है, अगर 9th में मिनिमम रन ही हमने स्कोर किया 6, तो 8 में मैक्सिमम वी कैन स्कोर इज 15. सो 15 + 6 विल बी अगेन 21. यानी इन 7 and 8 ऑल्सो इट इज नॉट फीजिबल टू स्कोर 22. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल 10 and 11. See, till 9 overs we had 73 runs and till 11 overs we have 93. It means that 10 और 11 में हमने क्या किया होगा? 20 रन ही स्कोर किया होगा. In 10 and 11 we just have scored 20 runs. यानी ये भी आंसर नहीं है. सो ऑब्वियसली आंसर यही होगा. ठीक है, A, B, C and E can't be my answer. So 9 and 10 is only feasible. So rather than finding which one is the answer, what I have done, I have simply skipped कि कौन कौन आंसर नहीं हो सकता. So the correct answer is what? Option D, which is 9 and 10. Next,
In which of the following over numbers the team must have scored the least number of runs. ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ रन देखो हमने अभी देखा था 6 और 7 में 6 रन ही बना रहे थे, तो लीस्ट तो वही है ना. ठीक है, टिल 5 इफ वी हैव 40 रन्स. ठीक है, तो 6th और 7th में, ठीक है, द मैक्सिमम रन्स दैट वी कैन स्कोर इज 6 and 6. सो 7th ओवर में भी मिनिमम तो 6 ही है ना, उससे कम तो हो नहीं सकता. सो मिनिमम रन्स इज स्कोर्ड इन विच ओवर, इट इज 7th. Okay, so this was question number 25 for you. Next we have is question number 26 to 28. So read the following scenario and answer the 3 questions that follow. A store offers a choice of 5 different discount coupons to a customer described as follows. Coupon A flat discount of 250 on a minimum spend of rupees 1200 in one transaction. Coupon B, a 15% discount on a minimum spend of rupees 500 in one transaction up to maximum discount of rupees 300. ठीक है, the maximum discount you can get if you apply this coupon is 300, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला. Coupon C, a flat discount of rupees 100 on a minimum spend of rupees 600 in one transaction. Coupon D, a 10% discount on a minimum spend of 250 in one transaction up to 100. And coupon E, a flat discount of rupees 50 on a minimum spend of 200 in one. The customers are allowed to use at most one coupon in one transaction. यानी अगर आप एक सामान ले रहे हो तो आप एक ही कूपन अप्लाई कर सकते हो, वन कूपन ऑफ योर चॉइस. ऐसा नहीं कि आपने ये कूपन भी अप्लाई लिया, ये भी यूज कर लिया. फॉर एग्जाम्पल जो हम ये यूज करते हैं पेटीएम में, स्विगी में, जैसे कूपन सिस्टम है ना, सेम थिंग. 2 or more coupons cannot be combined for the same transaction. So first of all, what I did, I had so many information. So I just tabulated the information given. Okay. So coupon A, the discount is 250, but the minimum spend that you have to do is 1200. Coupon B, the discount available is 15%. Okay, but for that minimum spend has to be 500, and the maximum discount is till 300. मतलब ऐसा नहीं है you bought something of 50,000 rupees and will be getting a discount of 15%. The maximum discount is 300 rupees only. In coupon C, you will be getting a discount of 100 rupees on minimum spend of 600. For coupon D, there is 10% and coupon A is 50%. Next, 4 customers used 4 different discount coupons for their respective transactions in such a way that they obtained a total discount of rupees 710. So out of these 5 coupons, 4 people visited the market and all the 4 have used different coupons. And the discount that they are getting is what? It is 710. The discount that they are getting is what? It is 710. So which discount coupon was not used? So ऐसा कौन सा discount coupon है जो नहीं use हुआ होगा? So first of all, let's see कि what is the maximum limit of discount one can avail in these offers. तो यहाँ से maximum discount कितना मिलेगा? 250 rupees का. The maximum discount here is 300. The maximum discount here is 100. The maximum discount here is 100 and the maximum discount here is 50. So 250 and 50 will be 300. This 300 and 300 is 600, 700 and 800. If I'll be using all the discounts, okay, the maximum discount I can avail is 800 rupees. The maximum discount I can avail is 800 rupees. So if I need a discount of 710, ठीक है, इसके बिना काम चलेगा क्या? 250 का डिस्काउंट नहीं, मैं 800 से 250 सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला. ठीक है, इसके बिना काम चलेगा क्या? अगर आपने 800 से 300 हटा दिया, ठीक है, 800 से 300 हटा दिया तो आपके पास क्या इतना 710 का डिस्काउंट होगा क्या? नहीं. अगर आपने ये 100 भी हटा दिया, फ्लैट 100 वाला, यानी फिर से आप 700 में आ गए. इस पे मैं फिर से डिस्कशन करता हूं. ठीक है, अगर मान लो मैंने ये 100 रुपीज वाला कूपन हटा दिया, अगर ये हटा दिया तो 250 तो सीधा गया. So never I'll be getting a discount of 700. If suppose I am removing this 100 rupees sharp मैंने decline कर दिया, ठीक है, so never I'll be getting 700 का ही maximum discount हो पाएगा. सेम चीज अगर मान लो मैंने इसको पूरे तरीके से भी यूज किया effectively, the maximum discount I'll be getting is of 100 rupees. ठीक है, so फिर से 700. लेकिन अगर मान लो मैंने कूपन E छोड़ दिया, suppose I'm not using this coupon E, ठीक है, I'm using this A, B, C and D. So what will be the discount? If I am using A and C, 350 तो ऐसे मिल गया. ठीक है, I'll be getting 350, 250 ये और 100 ये. That's sure shot. ठीक है, अगर मान लो मैंने ये पूरा कूपन यूज किया
ठीक है, so I'll be getting a 300 discount here. So 350 plus 300 will be what? It will be 650. Now I need extra how much? 60. तो 60 रुपीज का डिस्काउंट मुझे इसमें से मिल सकता है क्या? इसका अपर कैप है 100 रुपीज का. So can I get a maximum discount of 60 here? Or can I get a discount of 60 here? Yes, I can. So if I'm skipping option E, या आप क्या कर सकते हो? You can simply do hit and try. We can also do in this fashion. Suppose we are avoiding A और C को अवॉइड करना तो ऑप्शंस में नहीं है, बिकॉज द मैक्सिमम डिस्काउंट इज 800. अगर 800 से 250 चला गया तो 700 कभी नहीं होगा. 800 से 100 चला गया तो वो 710 तो कभी नहीं होगा. सो वी हैव टू चेक फॉर B, D एंड E. सो अगर मान लो मैंने B हटा दिया, इफ सपोज आई एम एलिमिनेटिंग B, ठीक है, तो B का जो मिनिमम डिस्काउंट है वो 75 रुपीज का है. सॉरी 15% है ना. सो 15 इंटू 5, हाँ 75 रुपीज का है. तो अगर मैं मिनिमम डिस्काउंट भी ये करूं, ठीक है, 15 का 75, या चलो मैं ये डिस्काउंट हटा ही देता हूं. सो लेट्स सी, तो ये 250, ये 300 का डिस्काउंट हो गया, 350 का डिस्काउंट हो गया. अगर मान लो मैं पूरा लिमिट भी यूज करूं, इट विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज एंड इट विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 150. यानी इफ आई एम स्किपिंग B, ओके, द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन गेट इज व्हाट? इट इज 500. सिमिलरली अगर मान लो इफ आई एम स्किपिंग दिस D, ठीक है, अगर मान लो मैंने D को स्किप कर दिया, सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन गेट? 250 फ्रॉम दिस, 300 फ्रॉम दिस, सो टोटल 550 हो गया. ओके, नेक्स्ट 100 रुपीज फ्रॉम दिस, सो 650 हो गया, एंड 50 रुपीज फ्रॉम दिस, सो स्टिल वील गेट स्टक इन अ डिस्काउंट ऑफ 700 रुपीज. ओके, सो द डिस्काउंट कूपन दैट वी कैन leave is what? It's option, it's E, coupon E. So option E will be the correct answer to the question. Next we have is question number 27. 4 customers used 4 different discount coupons for their respective transactions in such a way that nobody used any discount coupons suboptimally. What is suboptimally? Now they are saying a discount coupon is used suboptimally if using another discount coupon could have resulted in a higher discount for the same transaction. So what was the minimum combined spend before application of any discount? मतलब सब ऑप्टिमली आप कब यूज करें? जैसे अगर आपने किसी चीज का शॉपिंग किया, द कूपन दैट यू आर यूजिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट कूपन, इफ यू हैव यूज सपोज डिफरेंट कूपन, यू माइट हैव गॉट द मोर डिस्काउंट. तो ऐसा किसी ने नहीं किया, ठीक है. नोबडी हैज यूज्ड देयर डिस्काउंट कूपन सब ऑप्टिमली. सो व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट वाज द मिनिमम कंबाइंड स्पेंड ऑफ एनी डिस्काउंट? ओके, सो 4 कस्टमर्स यूज्ड 4 डिफरेंट डिस्काउंट. तो इसके लिए एक काम करते हैं, देखते हैं कि किस रेंज में मुझे कौन सा डिस्काउंट कहाँ से मिलने वाला है. सो सपोज इफ आई एम डूइंग द शॉपिंग, सो टिल 200 रुपीज देयर आर नो डिस्काउंट. एज सून एज माई शॉपिंग वैल्यू हैज राइज्ड फ्रॉम 200, जैसे ये 200 से ज्यादा हो जाएगा, सो दिस कूपन विल गेट एक्टिव. सो टिल 200, नेक्स्ट इज 250. देखो 250 में द डिस्काउंट लिमिट आई एम गेटिंग इज व्हाट? इट विल बी 10% टू 25. सो रादर देन यूजिंग दिस कूपन, इट विल बी बेटर टू यूज दिस कूपन. अगर मान लो मुझे 250 का आइटम लेना भी है, या 250 या उससे थोड़ा ज्यादा का भी सामान लेना है, तो अगर मैं ये कूपन यूज करूंगा, आई विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ ओनली 10%. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 500, नेक्स्ट लेवल इज 500. तो इमेजिन करो, अगर मान लो मैंने 200 से 500 का कोई भी सामान लिया, if I am using this coupon, the maximum discount that I can get is what? It will be 10%. तो अगर मैंने 200 से 500, तो अगर मैं 500 का रेंज में आ गया, तो I'll be using this coupon, right? तो अगर मान लो मैंने 200 से 499 की शॉपिंग की, from 200 if I am doing the shopping of 499, which will be the effective coupon to use? अगर मान लो मैंने ये कूपन यूज किया 10% वाला, the maximum discount I'll be getting that it will be 10% only. लेकिन यहां पर देखो, दिस इज नियरली 25%. ठीक है, 50 रुपीज का अगर आपको कूपन मिला है, ये 25% है, ये 15% है, दिस इज ऑल्सो 16.66% लाइक दैट, एंड ये तो 20% ऊपर है. तो अगर मेरी शॉपिंग 200 से 499 के रेंज में है, सो विच कूपन विल बी द बेस्ट? ठीक है, कूपन ई विल बी द बेस्ट. इस रेंज में कूपन ई विल बी द बेस्ट. कूपन डी यूज करके कोई फायदा हो गया क्या? नहीं. इवन इफ सपोज यू हैव परचेज डन अ शॉपिंग ऑफ 499, so the maximum discount you'll be getting is 49.9 पैसे. लेकिन अगर मैंने ये कूपन ई यूज किया, I'll be getting a discount of 50 पैसे.
बट वंस आई हैव रीच द मार्क ऑफ 500, ठीक है, सो आफ्टर दिस 500 नाउ दिस कूपन विल गेट ये 15% वाला कूपन एक्टिवेट हो जाएगा. सो टिल 500 टू 600, ठीक है, अगर मालूम मुझे 500 से 600 के बीच में कोई शॉपिंग करनी है, या नॉट 600, सपोज 600 इज नॉट इंक्लूडेड, या चलो 599 लिखते हैं. If I am doing the shopping from 500 to 599, so which coupon is most feasible to use or more better to use? The coupon of 15%, means coupon B is more favorable here. ठीक है, लेकिन एक बार 600 एक्टिवेट हो गया, once the value of 600 is activated, here it was I was getting only 15%, here I am getting 16.6%. ठीक है, तो 660, ठीक है, सो 600 से लेकर नियरली अगर आप 660 तक शॉपिंग करते हो ना, फ्रॉम 600 टू 660, ठीक है, कूपन बी विल बी, कूपन सी विल बी बेस्ट. आफ्टर दैट अगेन ये कूपन डी विल बी बेस्ट, क्योंकि फिर से 15% उसका मिलेगा, कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस इज दिए. देखो 600 से लेकर 660 665 के रेंज में अगर आप शॉपिंग कर रहे हो ना, सो यू आर गेटिंग हियर मैक्सिमम डिस्काउंट. लेकिन 660 या 670 के बाद, ठीक है, फिर से ये कूपन अच्छा हो जाएगा, 15% वाला कूपन अच्छा हो जाएगा. बट आफ्टर 660 वंस यू हैव रीच द मार्क ऑफ 1200 प्लस, ठीक है, देखो ये 300 मैक्सिमम है, तो ये 300 मैक्सिमम है, यानी कितना आप कितना ये तक यूज कर सकते हो. जस्ट अ मिनट, इफ आई वांट टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 300, ठीक है, तो मुझे कितने का शॉपिंग करना पड़ेगा? 15% ऑफ समथिंग इज 300, और x will be what? It will be 300 by 15 into 100, so it will be 2000. तो अगर मुझे 300 का ऑफर चाहिए, ठीक है, तो मुझे 2000 तक ये करना है. लेकिन जैसे ही 12,000 का शॉपिंग हो जाता है, देन आई एम गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 250 वाला. सो 1200 के बाद से लेके 2000 तक अगर मैं शॉपिंग करूं, ठीक है, तो यही डिस्काउंट ज्यादा अच्छा है. इस रेंज में कूपन ई इज बेस्ट, ठीक है, इस रेंज में कूपन बी इज बेस्ट, देन कूपन सी इज बेस्ट, देन अगेन कूपन बी इज बेस्ट, एंड देन कूपन ए इज बेस्ट. लेकिन नो वेयर, ठीक है, आई विल बी यूजिंग कूपन डी. कहीं किसी भी रीजन में कूपन डी यूज करके मुझे फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज इफ आई विल बी यूजिंग द कूपन डी इट विल बी सब ऑप्टिमली. सो आई विल नॉट बी यूजिंग कूपन डी. कूपन डी के अलावा मुझे नहीं यूज करना, उसके अलावा आई वॉन्ट टू यूज ऑल द 4 कूपन्स. तो अगर मान लो मैंने कूपन डी नहीं यूज करना है, सो कौन कौन से कूपन यूज करूंगा और उसके लिए कितनी शॉपिंग करनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई वांट टू अवेल अ कूपन, दिस कूपन आई नीड टू डू अ शॉपिंग ऑफ 1200. इफ आई वांट टू अवेल दिस कूपन, मिनिमम शॉपिंग आई नीड टू डू इज 500. इफ आई वांट टू अवेल दिस कूपन, द मिनिमम शॉपिंग आई नीड टू डू इज 600. and I'll skip D, ठीक है, because it will be subbed optimally. And if I'll be doing the shopping, if I want to avail this coupon, the shopping I need to do is 200. So minimum कितना शॉपिंग करना पड़ेगा? It should be 2500. इतना का मिनिमम शॉपिंग करना पड़ेगा, ठीक है. अब कूपन डी यूज करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, इट इज गेटिंग सब ऑप्टिमली, दैट्स वाई विल बी स्किपिंग कूपन डी, और बाकी कूपन हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट दैट वी हैव टू स्पेंड. Okay, now next we have is question number 28. So this is question 28. A family wanted to purchase 4 products worth rupees 1000 each and another product worth rupees 300. So total 4 items of 1000 rupees each and 1 product of 300 rupees each. One of 300 each. They were told that they could pay for the 5 products through though one or more transaction in any way they wanted, as long as the purchased amount of any one product would not get split into different transactions. ठीक है, तो आपको जो कूपन कोड करना है आप वो कूपन कोड यूज कर सकते हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्प्लिट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का, 500 में यहाँ पर दूसरे कूपन से पे कर रहा हूँ, 500 में दूसरे कूपन से पे कर रहा हूँ. यूज द सेम डिस्काउंट कूपन रिपीटेडली फॉर सेपरेट ट्रांजेक्शन. और सेम डिस्काउंट कूपन को आप बार बार यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन. व्हाट वाज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट दे कुड ऑब्टेन फॉर दिस परचेज. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखो मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें मिल रहा है. इन दिस आई एम गेटिंग नियरली मोर देन 20% ऑफ डिस्काउंट.
ठीक है, यहां पर मुझे 20% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. So obviously I'll try to use this. So if I have to use this a discount of 1200, so what I'll do, I'll take a product of this and a product of this, और मैंने दोनों को क्लब कर दूंगा. So मेरे पास effective price क्या हो जाएगा, it will be 1300. I've taken one product of this and this one, so total price will be 1300. अब इस 1300 के प्रोडक्ट में can I use this product or can I get this discount of 250? Yes, I can. So one discount I'm getting is of 250. Next, I have 3 products left, all of ₹1000. ठीक है, सो मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूंगा. देखो यहाँ द मैक्सिमम आई कैन गेट इज ₹100. लेकिन अगर मान लो मैंने ये कूपन यूज किया एंड द प्राइस वैल्यू इज 1000, सो आई विल बी गेटिंग 15% ऑफ 1000, राइट. आई विल बी गेटिंग 150. इफ आई एम यूजिंग दिस कूपन आई विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 150. अगर मैं ये कूपन यूज कर रहा हूं, आई एम गेटिंग अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 100 ओनली. तो अगर मुझे ये दोनों में से चुनना है कौन सा कूपन आई विल गो फॉर दिस कूपन. So for all the 3 other products separately I'll be using this coupon again and again. तो एक बार यूज करने पर for one product you will be getting a discount of 150. So for 3 product you will be getting a discount of 450 rupees. So the total discount that you will be enjoying is what, or the maximum discount that you can get is 700. Okay. So for question number 28 is the answer is what, it is 700. Okay, so this brings us to the end of the session. I hope that you might have enjoyed it. So very clear information. So I would just want to share a very important information. So join IIM Selection Mastery. Okay, learn how you can crack CAT 2024, GD and PI to get into IIMs and top B schools in just one attempt. Okay, and the approach is the personalized approach. So link for joining is given in the description. Please like it, and if you want more such videos, please subscribe the channel and please like the video. Okay, so with this I'm signing off. Let's meet for the another session with another paper, and till then it's goodbye from me. Thank you.